लाइव साउंड वहाँ का आप बोल के देखिए वर्मा जी ऑडियो में। हाँ ये एडीजी साहब के टेबल पे रख दीजिए एक को, ये एडीजी साहब के टेबल पे रख दीजिए एक को, और अंदर में ये तो मैं बंद करता हूँ अंदर में सर में वहाँ पे ये टेबल पे रख दीजिए और एक उनको दे देना। अरे वो साउंड वाउंड तो चला के देखो। बोलो बोलो कुछ। हाँ बोलो। हेलो हेलो देखिए तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on. हेलो हेलो वहाँ से ऑन किए सर अभिषेक से कंफर्म कर रहे हैं ऑडियो जा रहा है वहाँ।
ऑडियो जा रहा है क्या? ठीक, ओके। Good morning, everyone. We have been joined by our esteemed guests, accompanied by ADG sir. Before we begin, I request everyone to please take their seats and to keep their mobile phones in silent mode during the program. It is my humble request also not to bring any eatables into the auditorium. Thank you. I repeat, it is my humble request not to keep your phones on loud mode. Please keep them on silent during the program, and please do not bring any eatables into the auditorium. We are now ready to start the program. So with your permission, we'll start the program. Thank you, sir. Good morning, everybody. The 14th of February has a very special significance for all of us, known variously as Club Day, IRIMEE Day, and for us here at IRIMEE, our annual day. It was on this day, the 14th of February in 1927, that the first special class railway apprentice, Mr. H.P.M. Stewart, joined what was then the technical school, now IRIMEE, Jamalpur. This was the first induction of Indians into the upper echelons of railways as mechanical engineers through the SCRA scheme, the forerunner of our great fraternity of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, or the IRSME. On this extremely special occasion, it falls to me, Shashwat Gupta of SCA 2010 batch, currently posted as Professor WMT at IRIMEE Jamalpur, to welcome all of you here today on the occasion of IRIMEE Annual Day 2024. We are honored to have with us today some very special guests. I request all ladies and gentlemen to please put your hands together, and I request ADG Sir, Mr. P. Ravi Kumar, to welcome them each with a plant. A very warm welcome also to officers of Jamalpur Workshop, Eastern Railway, CA 969 Railway Regiment, our dear awardees, and other esteemed guests, both those who have joined physically and those joining online, because this event is being streamed online on IRIMEE's YouTube channel. Ladies and gentlemen, it is a real pleasure to have all of you here with us today. Mic off, please. Sorry for the delay. I request ADG Sir, Mr. P. Ravi Kumar, to please welcome Mr. R.K. Mangla, Additional Member Production Unit and Mechanical Engineering Railway Board, with the plant. I request ADG Sir to please welcome Colonel Arun Bhagra, retired AGM South Central Railway and ex-director IRIMEE, with the plant. I request ADG Sir
to welcome our guest speaker, Mr. S.K. Yagnik, retired CEO from NAIR and ex-director IRIMEE with the plant. It is said that all the darkness in the world cannot put out the light from a single candle. Since its inception, IRIMEE has always stood out as an alma mater and a beacon of knowledge to the IRISME fraternity and beyond. As Shakespeare said, how far that little candle throws his beams, so shines a good deed in the naughty world. To commemorate the spirit of our institution, with the blessings of the Lord Almighty, I now request the dignitaries present to begin the ceremonies by lighting the lamp of knowledge. I request our chief guest, Mr. R.K. Mangla, Colonel Anuj Bhagra, Mr. S.K. Yagnik, Mr. P. Ravi Kumar, Mr. Janardhan Prasad, Mr. Sudarshan Vijay. Thank you, sirs. I request our respected dignitaries to kindly light the lamp. Lecturer WMT, Mr. Bakla is requested to escort the guests, please. Thank you. Thank you all, respected sirs. Now taking the program forward, I shall begin the seminar with a brief introduction. 3 years ago, true to the fundamental core of all we do here at IRIMEE, namely the propagation of technical knowledge relating to railway systems and technology, starting at Annual Day 2021, when the world was still in the throes of the coronavirus pandemic, IRIMEE began hosting a series of webinars on various emergent aspects of railway technology. It was an initiative that we called the IRIMEE Annual Day Lecture Series. Now, in a thankfully post-pandemic scenario, with offline training well underway once again, we have continued the practice with offline seminars in the physical rather than the online mode. The aim continues to be the same, bringing together subject and domain experts in various fields under the aegis of IRIMEE to enable learning and cross-pollination of ideas. On the same note, this year, in 2024, we are joined today by our esteemed guest speaker, Mr. S.K. Yagnik. Happily, this is the first time that our guest speaker has been able to join us here at Jamalpur, and we are delighted to welcome him here. Mr. Sharad Kumar Yagnik is a mechanical engineer belonging to the 1981 batch of Special Class Railway apprentices. Over his long career of over 35 years on the Indian Railways, culminating in his retirement as Chief of Faculty Mechanical at National Academy of Indian Railways, or NAIR, Vadodara. He served at several important posts, including Director in the Ministry of Defense, General Manager in Rights, and as Director IRIMEE. He is an expert in the fields of lean management, public procurement, and accident investigation. For today's seminar, Sir has very kindly consented to spare some time to give us a brief overview of the export potential of Indian Railway rolling stock, for which he will draw upon his vast experience and expertise in dealing with rights contracts and procurement in the Ministry of Defense. I now invite Sir to kindly begin his lecture, to be followed thereafter by a short Q&A session with the audience. Sir, please. A very good morning, gentlemen, ladies and gentlemen. I'll just take a few minutes to set up my presentation.
I'll request you to kindly be patient, and it will not take more than 2 or 3 minutes. I'll be. These are the headaches of the technology, that you are so much dependent on these tools now that sometimes it becomes irritating. But I request you to kindly bear with it. Very good morning, ladies and gentlemen. I am humbled to thank ADG on this particular occasion when he has invited me for this call. A very generous introduction by Shashwat about my career. Had a very humble career in railways. I welcome Shri Arun Bhakra, who has been kind enough to be present here, ex-director IRIMEE, and very respected and esteemed senior for our entire faculty, Shri R.K. Mangla. He has been very kind friend all throughout the career. Last 42 years we have been there, and shared many memories. He is here, additional member Railway Board. ADG Shri Ravi Prasada. So much of thanks for calling me here, and Shri Vijay CWM, a very good friend from my old Jamalpur days when I was here. On the occasion of annual day, I greet the entire IRIMEE faculty and the trainees who are present here. It is also occasion of Saraswati Puja. My warm greetings, and may the goddess Saraswati give us in this temple of knowledge, give us the vision and the foresight to see the things for future and how we can progress in this life, our personal also and professional also. The officers of Eastern Railway workshop, faculty of IRIMEE, all the pillars of strength, that is the trainees of IRIMEE, a very warm welcome on this very pleasant afternoon, good morning of 14 February. Friends, the topic is export strategies for rolling stock. This is just a small synopsis of what I have seen in rights as a chief workshop engineer, RCF also a part of my knowledge which I could gather from by virtue of my posting in Defense Ministry, and some readings which I did in staff college. Will it be okay if I switch over to Hindi? If there is anybody who is facing problem in English, I'll continue with English. Otherwise, if the participants permit me, I'll switch over to English or Hindi. Will it be okay? Anybody not okay with Hindi only can raise their hands. Okay, thank you. तो दोस्तों, जो मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन वर्किंग विद प्रोडक्शन यूनिट्स? पीयूज में कितने लोग काम कर चुके हैं? ओके, सो देयर इज अ गुड नंबर, नॉट मेनी. इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए तो ये डायरेक्ट इशू है, जहाँ पे कि आपका पार्टिसिपेशन और आपका फोरसाइट और विजन आपको हेल्प करेगा, और बाकियों के लिए भी, क्योंकि इंडियन रेलवे से ये कनेक्टेड इशू है सब्जेक्ट, और उससे बड़ी बात ये भारत देश से कनेक्टेड इशू है. तो आपको फोरसाइट एक देने की कोशिश अगले 40 मिनट में करना चाहूँगा. फर्स्ट क्वेश्चन जो कल जिसके बारे में थोड़ी सी टोन सेट हुआ था कि एक हमारे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था एक वर्दी हमारे ट्रेनी ने कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट अवर रोलिंग स्टॉक. एंड
उससे भी बड़ा प्रश्न है कि वाई एक्सपोर्ट्स. तो देयर वाज अ डिस्कशन ऑन वन particular aspect that we already have a huge demand. There is a forecast for Indian Railways for next 30 years at least. आप लोगों ने शायद नेशनल रेल प्लान का नाम सुना होगा. मैं एक सेकंड के लिए आपकी नजर उस पर डालना चाहूंगा. वाई एक्सपोर्ट, जब हमारे अपने देश में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है जिसकी की सब्सटेंशियल डिमांड है. डिमांड इन द सेंस कि up to 2050 Ministry of Railway have drawn up a plan which was presented to Honorable Minister by CRB in 2020 December, and about which Senior Professor Janardhan also spoke, that what is our vision for next 30 years up to 2047. The vision of Indian Railways that, as AMPO rightly said, to become a world-class railway. But at the same time, a very objective vision, both objective vision terms of number of passengers you want to carry, number of million tons of freight which you want to carry, ये भी सेटअप किया गया. अगर आप मैं चाहूंगा कि ये जितनी भी फैकल्टी और ट्रेनीज उनको ये प्लान डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि ये आपकी बाइबल है कि आपको कहाँ जाना है अगले 20 साल में, अगले 30 साल में. लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो इस रिपोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है प्रेजेंट सीनियरों को एनालिसिस करने का, ये बताने का कि इंडियन रेलवे केवल अभी 27% का फ्रेट ट्रैफिक कैरी कर रही है, जो कि कभी 85% रहा करता था 47 में. तो उस ग्राफ को देखें तो आपकी ग्रोथ बहुत हेल्दी नहीं कही जाएगी. और साथ ही इसने ये बताने की कोशिश की है कि आपको अगले 2051 तक का रोड मैप ड्रॉप किया है. इसने ये बताया है कि टोटल जो ग्रोथ ऑफ, इसमें लेजर पॉइंटर है, ये सॉरी ये स्लाइड तो बैक हो गया ना. प्रीवियस स्लाइड कहाँ गया? प्रीवियस इसने ये कोशिश किया बताने की कि आ रहा है, हाँ ये वाला बटन मेरा, चलिए ठीक है मैं इसके बिना क्या करूँ. What this particular forecast has been trying to tell you is that in 2019 your total traffic carried by all modes, that is road, rail and railway, was about 4.7 billion tons. इसमें से रेलवे का शेयर करीब करीब उस समय 1485 था. आज की डेट में करीब करीब हम लोग 1580 या 1600 मिलियन टन, एम साहब ज्यादा सही बता पाएंगे, 1580 के मिलियन टन के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं. और हमारा शेयर करीब 27% था इन इंडियन सिनेरियो. 2051 में टोटल फ्रेट ट्रैफिक टू बी कैरीड ऑन इंडियन इकोसिस्टम विल बी 15583, करीब करीब 15,583 मिलियन टन. यानी कि आप समझ लें इसका दूसरा टारगेट जो सेट किया है इस नेशनल रेल प्लान ने, कि रेलवे को, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि रेलवे हैज टू बी नाउ मोर एंड मोर प्रोएक्टिव. तो आपको 45% ऑफ दिस ट्रैफिक यू हैव टू कैरी, which gets converted to about 7,000 million tons. So you have to rise from 1,500 odd million tons in 2020 to 7,000 million tons. कोई छोटा टारगेट नहीं है. आपको 30 साल में लगभग 4.5 गुना, 4.5 times you have to grow, which is a compounded growth rate of about 15.5 or 16%. Not a easy target. आज की डेट में करीब करीब आप 15% की लगभग ग्रो कर रहे हैं. एक दूसरा इसने टारगेट दिया है जो हम लोगों को बोला गया है पैसेंजर का. पैसेंजर डिमांड ये केवल रेलवे की पैसेंजर डिमांड है, क्योंकि रोड जर्नीज इनफॉर्मल सेक्टर में आती है. इट डज नॉट ट्राई टू क्वांटिफाई दैट. टुडे यू आर कैरिंग 808 crore people, 8080, that is 8.08 billion passengers every year. That is figure of 2018. By 2051 you have to go to 19469, that is
19.46 बिलियन पैसेंजर्स, करीब करीब 1946 करोड़ पैसेंजर्स आपको सालाना कैरी करने होंगे। ये भी ग्रोथ टारगेट इतना स्टीप नहीं है, परंतु ये भी सब्सटैंशियली हाई है। इसकी मेन बात यह है कि इसमें सबर्बन ट्रैफिक जो अभी आधा कैरी कर रहे हैं आप, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई सेक्शन में, ये इसका आधा सेक्शन है। इसको ग्रोथ को इन्होंने माना है कि ये मेट्रो रेलवे सिस्टम कैरी करेगा, आप ज्यादा कैरी नहीं करेंगे, तो सारा का सारा लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर में ये ग्रोथ कन्वर्ट हो रहा है। ये दे दो, तो पहले ही दे देते हैं। ठीक है, तो am I clear? So this growth is mostly in मेट्रो। सबर्बन का ग्रोथ मेट्रो को दे देंगे, जो कि करीब करीब आज की डेट में 405 करोड़ यात्री आप ले जाते हैं मेट्रो सबर्बन सेक्शन में। वो आपको ज्यादा ग्रो नहीं करना है, वो करीब करीब उसकी ग्रोथ उन्होंने 525 के करीब बताई है। तो बाकी सारा ग्रोथ आपको लॉन्ग डिस्टेंस में करना है। तो दोस्तों ये टारगेट बहुत स्टीप है, और आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको इसके अलावा भी इस नेशनल रेल प्लान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडीजी साहब से डिस्ट्रीब्यूट करें, फैकल्टीज को भी अगर ये जानकारी होगी कि हमें कहाँ जाना है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग शायद अपना काम करते समय, जब हम लोग अपने किसी डीजल शेड में या किसी इलेक्ट्रिक लोको शेड में या कैरियर वैगन लाइन पे काम कर रहे हैं, हमें पता होगा हमें कहाँ जाना है और मेरा पैसेंजर में से क्या एक्सपेक्ट करता है, मेरी सरकार में से क्या एक्सपेक्ट करती है। As I said, if we don't perform, somebody else will. So we have to be better prepared. Now, the question is, when there is such a huge upswing in the total national demand of 15%, why should we think about exports? तो इसका प्रश्न का सवाल का जवाब हम लोग आखिरी में तलाश करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर आई हैव मेड द प्रेजेंटेशन, करीब 35 मिनट की है, इसको कृपया देखिएगा। फेल टू प्रिपेयर एंड बी प्रिपेयर टू फेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन फाउंडर फादर, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन की थी, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप फेल होने के लिए तैयार हैं। कंटेंट्स आज की इसमें प्रेजेंटेशन में, रोलिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल प्रोफाइल। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोफाइल क्या है, बोथ इन नेशनल इंडस्ट्री, that is Indian Railway system, and outside Indian Railway system in private sector. Export performance past and recent. I'll just touch upon this subject very shortly because I don't want to spend much time on this. Mode of funding and competitive bidding. Yesterday it was spoken by PCME Eastern that we have to we get the orders in line of control. What is that? I'll try to describe that also. And what is the competitive bidding scenario present? What is the strategy of our competitors? How are our competitors? Some our friends said that हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान और अपने श्रीलंका में भी बेचने में दम निकलता है। तो क्यों दम निकलता है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। तो इफ वी नो अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ आवर कॉम्पिटिटर, वी आर एबल टू मेक आवर कॉम्पिटिटर आवर स्ट्रेटेजी। चेंज इन स्ट्रेटेजी, हम लोगों ने क्या किया है, और वे फॉरवर्ड, हम लोग आगे क्या और क्या करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी प्रश्न हो, ये जो सेक्शन है हम पूरा करने के बाद या तो तब आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूंगा कि हम लोग कम स्लाइड्स कवर करें, लेकिन आपके डाउट्स का निवारण करते हुए हम लोग आगे बढ़े। आफ्टर वी हैव क्लैरिफाइड योर डाउट्स, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू। योर प्रेजेंट जॉब इज इंटैक्ट, बट फ्यूचर ऑफ रेलवे हैज टू बी इंटैक्ट। दैट इज आवर टारगेट। रोलिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड ग्लोबल पिक्चर। Our production units, I'm basically talking about PUs, although as you know, Jamalpur workshop also manufactures crane. Wagons are manufactured in large number of, at least 3 workshops I know are manufacturing wagons. And I'm right now focusing on the rolling stock production, which is done by our Indian Railway production units. I hope it is visible. There is in the end, you can see. No, there's a difficulty. Okay. 8 production units are there. Producing 3 of them are in the coach manufacturing sector, including EMU and Vande Bharat. करीब 3 हैं उसमें लोको प्रोडक्शन में, और 2 हैं व्हील फैक्ट्रीज एंड एक्सल फैक्ट्रीज। टोटल प्रोडक्शन करीब 32,000 करोड़ का, ये फिगर 19-20 की है, 2019-20 के आसपास की है।
आज की डेट में ये फिगर करीब करीब 3% के ग्रोथ पे ये 35,000 के करीब टच कर रही होगी. I'm sorry about the figures because they are not latest, because right now I don't have access to all the e-Drashti portals where I had collected when I was in IR. These figures were collected about 2 years back. Employee strength was about 4,500, 45,000. It must have gone down now. Now employee strength in our PUs is much less. Impact, इसका क्या फायदा हुआ इन प्रोडक्शन यूनिट के सेटअप करने से कि हमारी अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है इंडियन रेलवेज की, इसको हम एक स्टेडी सोर्स ऑफ रोलिंग स्टॉक प्रदान करा पाए हैं. अगर आप किसी और कंट्री को स्टडी करें, साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में, जिन्होंने अपने रेलवे ओन पीयूज को नहीं बढ़ावा दिया है, इवन ब्रिटिश रेलवे की अगर अर्ली हिस्ट्री देखें, जब उन्होंने अपनी यूनिट्स रखते थे तो ब्रिटिश रेलवे वाज वन ऑफ द लीडिंग रेलवेज, बट एज दे हाइव्ड आउट द यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर, their rail segment growth has relatively reduced. China Railway today is developing because it has its own CRRC, its own in-house manufacturing facility. So I am very strong believer of an in-house manufacturing facility. Without this, you cannot grow the way you want to. And it has sustained our growth so far. Whatever we targeted, not that country wanted more, but we, as a bureaucrats and Indian Railway people, we targeted less. And whatever less we targeted, we got out of it. दूसरा इसका जो बड़ा फायदा हुआ है वो है टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन. हमारी ओपन लाइंस को डिजाइन चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स आ रही कंपोनेंट में, तो इतना क्लोज सिस्टम है कि हम लोग इंटरेक्ट करके मॉडिफिकेशंस कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं. टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इंडिजिनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स कर पाते हैं. ये इसीलिए संभव हुआ है कि हम लोग हर बार ये नहीं कि टेंडर करना है, आपको 800 कोच इस साल चाहिए तो आप एक टेंडर करेंगे और कभी कोच चाइना से आ रहा है, कभी रशिया से आ रहा है, कभी अमेरिका से आ रहा है. ये आपका नहीं है. तो एक ग्रोथ स्टेबिलिटी आपको मिली है. बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने ये रोल प्ले किया है. कोई भी जब बात करता है कि साहब IR के पीयूज को कॉर्पोरेटाइज करें, तो मैं इस चीज की तरफ ध्यान दिलाता हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें. जिन्होंने भी सक्सेस प्राप्त की है उन्होंने अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रखे हैं, और जिन्होंने नहीं रखे थे और अब उसको हाइव आउट कर दिया है, उनका डाउनफॉल हुआ है. कैपेसिटी आउटसाइड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, as you know, lot of private sector rolling stock and manufacturing units have come up. I am talking only of rolling stock today because as a part of the IRIMEE seminar and rolling stock strategy, we are focusing on this sector only. I am not talking about signaling equipment or track equipment or OH equipment. We are not talking about that. Outside the MOR, we have locomotive factories at Morora, Madhepura, BHEL, SAN also manufactures shunting locos. Wagon industry, most of the wagon industry is located outside the MOR. Ministry of Railway के बाहर wagon बनते हैं private industry में. कैलकाटा बहुत बड़ा हब है. मॉडर्न इंडस्ट्री, टेक्समेको, टीटागढ़, कई सारी यूनिट्स इसमें आती हैं. करीब 40 से 50,000 वैगन हर साल बनाते हैं. रेलवे इसमें से हार्डली करीब 2 से 3,000, 2,500 वैगन बनाता है. मेट्रो कोच प्रोडक्शन लगभग पूरा बाहर है. मेट्रो कोच जितने बन रहे हैं, जैसे कल बात कर रहे थे हमारे हैं कि 500 से 700 कोच एल्स्टॉम, टीटागढ़, BEML ये लोग बनाते हैं. अब हम अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, व्हाट इज द ग्लोबल पिक्चर इन एक्सपोर्ट्स एंड व्हाट इज द इंडिया शेयर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो. आई एम स्केयर्ड ऑफ यूजिंग दिस, बट लेट मी नो, आई कांट, सॉरी. ये मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, इफ यू सी द फर्स्ट बार इज ग्लोबल ट्रेड इन रेलवे इक्विपमेंट, दैट इज the equipment which are sold globally. I am by selling I means ki either the same railway issuing a tender to its domestic company or to a global manufacturing company. That trade is 190 billion ton, but it doesn't include the purely local departmental production. So 190 billion dollars का ये करीब business है, आप समझ सकते हैं. और this is data is based on the EXIM report of bank report of 2015-16. उसके बाद कोई स्टडी, फॉर्मल स्टडी मेरी नॉलेज में नहीं है. अगर किसी को पता हो तो मेरे को करेक्शन कर सकते हैं. बट EXIM बैंक रिपोर्ट 2015-16 मुंबई से ये डाटा आया था. टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल ट्रेड इन रेलवे प्रोडक्ट्स इज $190 billion.
भारत का शेयर उस समय 150 मिलियन डॉलर, आज की डेट में निकालें तो करीब 15 इंटू 8 1200 करोड़ है। इसमें मैं रेलवे का भी मान रहा हूँ एक्सपोर्ट, और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री भी बाहर भेज रही है सामान। और CRRC जो हमारा क्लोज सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसका है 3.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट। तो आप समझ सकते हैं 3.5 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है, हमसे 150 के मुकाबले करें तो लगभग 23 गुना ज्यादा है, रफली 23 टाइम्स। बट उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमसे 23 गुना ज्यादा नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर देखेंगे तो 1.5 से 1.25 गुना ज्यादा है। देयर ओनली एज इज इन द हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक। Other than that, normal conventional coaches, passenger coaches, freight wagons, locomotives, diesel locomotives, almost the same. If you produce 900 locomotives, they produce say 1200 locomotives. If you produce say 6,000 or 8,000 coaches, their coach production is much less than you. But yes, electrical multiple units for high speed railway, they have a distinct edge. और high speed में उनका जो मुकाबला अभी वर्ल्ड में कोई नहीं कर पा रहा है। 28,000 किलोमीटर से ऊपर उन्होंने बना दी है। बाकी सारी पूरी वर्ल्ड रेलवे भी मिला ले तो हाई स्पीड रेलवे में चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लोजेस्ट कंपटीटर आपका जो है और सबसे बड़ा कंपटीटर हमारा है, वो करीब 23 गुना ज्यादा आपसे काम एक्सपोर्ट मार्केट पे कर रहा है। अगर आप चलिए चाइना को हम बात छोड़ते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। हमारी एक इंडस्ट्री का मैंने डाटा लिया 2022-23 का, हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स इंडिया का है 453 बिलियन डॉलर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक तरह से विजन रखा है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे बाय 2047, और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो हमें अगले 3 साल में बनना है। तो अगर ऐसा होना है और 2030 तक अगर आपको 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, तो आपका कम से कम ग्लोबल ट्रेड 2027-28 तक भारत सरकार का टारगेट है 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का। 22-23 की फिगर दी 453 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट आपने किया, 453 बिलियन डॉलर का। और उसमें जो लेदर एंड फुटवेयर, जिसको कि हम मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री में गिनते हैं, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जबकि रेलवे को हम भारत की लाइफलाइन मानते हैं, वी एज्यूम दैट वी आर द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। आवर share in the Indian exports is 0.04%, and the leather and footwear at $5.26 billion was almost 30 times you, and the total share of theirs was more than 5.2 of this is almost 0.7% or 0.8%. So you can imagine that compared to even a small industry, अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात कर लूँ तो इससे बहुत ज़्यादा है फिगर। ड्रग्स की बात कर लूँ तो 30 बिलियन 40 बिलियन की फिगर है। मोबाइल फोन जो कि अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, उसमें भारत का एक्सपोर्ट शेयर आज की डेट में 8 या 9 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। उसके मुकाबले हम बहुत पीछे हैं, और ये चीज या तो हम चिंता ना करेंगे साहब, हमारा अपना बहुत कैपेसिटी है, हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन वो क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट में क्यों आना है हमें। कुछ इम्पेडिमेंट्स की कल बात हुई, इनमें मैं अभी डिटेल में बात लास्ट में करूंगा, बट ये माना जाता है कि हम लोग स्टैंडर्ड गेज में हम लोग इनरोड्स नहीं कर पाए। स्टैंडर्ड गेज हमारी जो स्टैंडर्ड गेज, आई होप पीपल नो, इट इज मोस्टली प्रेवेलेंट इन यूरोप, चाइना। All the developed railways have been working on standard gauge. We have been working on broad gauge. तो एक तो कहा जा सकता है कि ब्रॉड गेज में साहब हमारा प्लेटफॉर्म है, तो ब्रॉड गेज तो हमने कर लिया, लेकिन स्टैंडर्ड गेज में क्योंकि मेजर मार्केट है तो हम लोग इसमें इनरोड नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट नहीं है, मैं आप बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दूसरा इम्पेडिमेंट या जो दिक्कत है एक्सपोर्ट्स में घुसने में, वो है इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट्स। दैट मीन्स वी आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेटअप, हमें L1 में ही गुड्स लेना है। जैसे कल PCME ईस्टर्न कह रहे थे, हम क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते कि हमारी अपनी वर्क फोर्स को हम ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते, उसको कह नहीं सकते कि भाई बाहर जा रहा है माल तो अच्छा काम करो। सो दीज इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स आर ऑल्सो इम्पेडिमेंट, परसीव्ड इम्पेडिमेंट्स। हम सोच रहे हैं कि हैं, हालांकि मेरे विचार से इन सबको हम लोग बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में एक मिशन है कि हमें अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट पे रखना है या नहीं रखना है, और पुट फोकस ऑन इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। अगर प्रोडक्शन यूनिट को बोला जाता है कि साहब 10 लोगों को मोजाम्बिक के लिए या 200 कोच आपको श्रीलंका के लिए बनाना है,
तो पहले वो बोलते हैं नहीं साहब हमें वंदे भारत और अपनी जो है वो इलेक्ट्रिक लोको जो 9000 HP के हैं उसकी हमारी डिमांड आई हुई है, वो पहले मीट करेंगे। आप तो सेकेंडरी हैं, राइट्स को ये अक्सर सुनने में आता है, राइट्स में से हम जब पीयूष को अप्रोच करते हैं, आप तो सेकेंडरी हैं, जब टाइम मिलेगा तो आपका देख लेंगे हम लोग। अभी तो हमारी मीटिंग जो है इसी पे चल रही है कि वंदे भारत के लिए इनपुट्स कैसे लूं। तो main focus is on internal requirement because internal market is very easy to capture. आपको पता है आपका कस्टमर इंडियन रेलवे है, जो भी देंगे वो ले ही लेगा, आपको मना नहीं करेगा। सो प्लस नंबर्स उसी से बढ़ते हैं। आपको अगर 450 लोगों निकालने हैं और अगर 10 मोजाम्बिक के लोगों निकालने में जितना, क्योंकि डेवलपमेंट एफर्ट है, केप गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, जितना दम लगेगा उसके मुकाबले आप 100 लोगों आसानी से अपने भी निकाल पाएंगे। तो ये माइंडसेट भी है। लेकिन जो ज्यादा बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं, हैविंग सीन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स, आई कैन से इज द कॉस्टिंग एंड क्वालिटी। क्या फर्क है, मैं जब मेन डिस्कशन में आऊंगा तो मैं इनके बारे में बात करूंगा। ओके, एज आई प्रॉमिस्ड, आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेक्शन दैट इज ग्लोबल मार्केट क्या है, हमारा अपना सिनेरियो क्या है और हमारे इम्पेडिमेंट्स क्या है, मैं इस समय रुक रहा हूं। कोई भी प्रश्न हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन। You can prefer to ask question at the end also. I kept a session, but in the middle of the section, because I believe that sometimes you feel like asking a question initially when a slide is there, बाद में आपको लगता है कि साहब भूल गए, तो कोई प्रश्न किसी का भी आ रहा हो, I'll be happy. Okay, don't worry. We have time at the end, and the main question which I am asking the audience, which you have to answer me in the end, is कि why export? जब हमारे अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इतनी सारी है, नेशनल रेल प्लान ऑलरेडी बोल रहा है कि आप सब 15% ग्रो करिए, यानी कि जो 800 लोगों बना रहे हैं हो सकता है आपको 1500 लोगों बनाने पड़े 3 साल बाद। तो हम लोग क्यों एक्सपोर्ट में घुसे, ये मैं आपसे पूछूंगा। अगर आप मेरे से नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सो बी रेडी। Okay, now we have a very small, I would say, review of the performance which has been delivered by Indian Railways in the recent past and the old past, and we'll see where we stand. यानी it's not that exports जब मैं कहता हूँ कि हम नहीं कर पाते हैं, बहुत कम है, मैंने पहली 2 स्लाइड्स में बोला, तो ऐसा नहीं कि नहीं है, काफी एक्सपीरियंसेस हैं, सफिशिएंट पेनिट्रेशन है इंडिया की, और अफ्रीका, एशिया में और लैटिन अमेरिका में वी हैव sent our goods in a very good number. So it's not that we are zero. We are still, China is very high, but still we are substantial. We are considered a force in export market. So please don't be disheartened when I say that our performance is worse than the footwear industry. We are not so bad. इसीलिए ये स्लाइड आपको थोड़ा सा हौसला दिलाने के लिए मैंने डाली है। हम लोग जमालपुर में खड़े हैं। सबसे पहला जो एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड मेरे को दिखा अपने, जब मैं हिस्टोरिक डाटा देखने लगा, पहले हम लोग प्री इंडिपेंडेंस में वी वर मोस्टली डिपेंडेंट फॉर द रोलिंग स्टॉक ऑन द ब्रिटिश ईरा कंपनीज इन मैनचेस्टर एंड इन द यूनाइटेड किंगडम, एंड लोकोमोटिव्स, कोचेस, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम देयर, बट देयर इज अ वेरी bright spot in the Indian Railway when the Mesopotamian Railways, they gave an order to Jamalpur workshop for manufacturing giant lifting screws measuring 9 feet by 3 feet for their Gurmat Ali Bridge. उनका कोई ब्रिज बन रहा था, उन्होंने जमालपुर वर्कशॉप को, बहुत एक्यूरेट वर्किंग थी, ब्रिज वाज द लिफ्टिंग बैरियर टाइप, एंड दे गेव ऑर्डर टू, इट वाज अ रेलवे ब्रिज, दे गेव ऑर्डर टू जमालपुर. सो इट वाज अ वन ऑफ एक्सेप्शन प्री इंडिपेंडेंस. जमालपुर का ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत सारी हैं, लोकोमोटिव्स भी यहाँ बने हैं, कई सारे स्टॉक्स बने हैं. इसके अलावा आपको जैसे पता होगा, हालांकि रोलिंग स्टॉक का नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी को शेल्स बनाने में यहाँ काम किया गया है, कई सारे एमुनेशन यहाँ पे बने हैं, जिनके की इंजीनियरिंग पार्ट्स यहाँ पे बने हैं. But I'm not going into those details. CWM knows that better. He has been doing a very good work in collecting those details in the
the museum which he is creating. I don't know how many of you have visited the museum here. It's a wonderful place. एक बार जरूर जाए. Post independence, after the independence, when our production started coming in, ICF, CLW, DLW, the beginning was made directly by railways. 1968, we sent the first MG bogie to Thailand, and this was followed by Cape gauge coaches to Taiwan. So, despite our broad gauge system not matching with the gauges of Asian countries, we were able to send coaches to Taiwan. And then there was a major order by DLW in 1975 for MG locomotives. If I am wrong, I may be corrected. This is the data I collected from the websites of BLW and ICF. However, the major impetus to the export was received after the export arms were created in the public sector undertakings. Why export arm? Well, direct export by government of India is possible. It's not that we have not exported. As I showed you 3 incidents where we exported the either the bogie or the coaches or the locomotives. And recent example in which we have sent the material is to sending about 30 locomotives to Bangladesh. I am sure about 30 diesel locos, you must be hearing that news. Between 2020 and 23, 30 locos of diesel locomotives were sent to Bangladesh, but they were part of the free gift from Government of India. They were not sales. So free gift और सेल में क्या फर्क है? जब आपको किसी कंट्री को अंडर कमर्शियल अरेंजमेंट किसी प्रकार से एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले आप उसको, कोई कंट्री आपको डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देता कि मेरे को भेज दो. They will generally, even if it is a line of credit case, which I'll come to the later slide, what is the line of credit. There also they issue a tender और आपसे कहते हैं कि आप बिड सिक्योरिटी भरिए. तो सबसे पहली दिक्कत तो गवर्नमेंट यूनिट को ये कि बिड सिक्योरिटी बाय अ production unit means that Government of India is pledging its security to a independent country outside India, and that is something which is very issue of great prestige. Government of India, suppose it gives a bid security, DLW gives a bid security to say Taiwan or to Mozambique, and for some reason they deduct the money क्योंकि आपने टाइम से लोगों नहीं दिया था और उसमें वारंटी रिपेयर थी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस्टीज का इशू आता है कि उन्होंने हमारी वारंटी के ऊपर deduction कर लिया. So Government of India will never ever try to give bid security for exports. That is why one of the basic reason why export arms were created was that bid security could be sourced through a PSU, not through directly Government of India. Bid security नहीं दी जाएगी क्योंकि it's a question of sovereign country pledging its security in hands of another nation. तो ये चीज आप समझें कि कई बार ये सवाल आता है कि हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं, राइट्स की क्या जरूरत है. सबसे बड़ा कारण ये है. इसके अलावा भी कई इंस्टीट्यूशनल इम्पेडिमेंट्स हैं. आपको अगर वहां टीम भेजनी है, in 1974 rights was created for this problem and export pitch gathered momentum. Why a export arm is required? Because अगर आपको कोई टीम भेजनी है, उसने कहा सब लोगों के अंदर क्रैंकशाफ्ट चेंज करनी है, आपको 3 लोग भेजने हैं, तो पीएसयू को भेजने, प्रोडक्शन यूनिट को भेजने में महीनों लग जाएंगे, जबकि ये दिनों की बात है. You have to send people in days. Now this is possible through an export arm. If rights has to send a person, it can send it next day, person to foreign country. But a Government of India cannot do it. It has to follow all the routes of Ministry of Minister's personal clearance is required for each of these cases. Below a certain level, probably CRB. I'm not aware. AMPU may be knowing more. In earlier days, we were sending all cases to the Minister for Foreign Visit of our people. So this is also not possible in such a short time. So these 2 reasons, then you have to station your people in countries abroad. आपको एक टीम रखनी है वहां पे 3 साल के लिए, 2 साल के लिए. तो इंडियन रेलवे ये नहीं कर पाएगी, अपने पर्सनल का डायरेक्ट प्लेसमेंट आप नहीं कर पाएंगे. So you have to take a via media, and that via media was public sector. So one was rights. Second was second order, which was one was by IRCON. IRCON did a wet lease or 25 IDM locos to Malaysia. Also sent new supply 1 number and 3 locos to Sri Lanka. This is the record of
ERCON. Konkan Railway Corporation Limited also tried its hands in exports, but because exports, a lot of issues are there. So all the PSUs have been trying. Railway Ministry does not bar any other PSU from entering into the export market, but it is the rights so far which has been able to hold a predominant position because of the structural modifications which were created long back. So Konkan Railway sent 2 DMUs to Nepal. Private sector also has been exporting. Bombardier, which is now Alstom, from its Vadodara factory, has sent 450 coaches to Australia. So we have a reasonably good record. If I look at rights record only, 887 coaches have been sent so far. 168 locos have been sent. 264 demos, motor coach and trailer coach have been sent. Time. Track which we have catered is mostly broad gauge, meter gauge, and Cape gauge. We are supplying to African countries. We are supplying to Asian countries. In these 3 gauges, we are comfortable. The yet to be explored section is standard gauge, because as I said, standard gauge is mostly in the developed countries. And there, because we don't have a standard gauge in India, so our development on our own is very little. However, rights have done some designing for standard gauge locomotive. One locomotive has been made in BLW now. We are waiting for some suitable country like American railroads or Latin American country to buy that on a trial basis. So if that happens, we'll also be able to make a inroad in standard gauge. These are the details for export locomotives. I'm not going into each country, but Tanzania, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, all these details you can find on the website of ICF also. BLW also. And 168 locos. More are in pipeline, which I'll show you later. And these are the details of the coaches which have been exported by ICF only to various countries, about 875. These are a matter of details, but I'll not go into the each case, but you can just as a matter of interest, you must know that we have substantial records of supply. It's not that nobody is buying from us. Recently, RCF, apart from BLW and ICF, RCF has also entered into a fray. In 2006, ICF supplied 20 meter coaches through rights to Senegal, 36 meter gauge coaches to Myanmar, and then 120 coaches were sent to Bangladesh, broad gauge. MCF recently, in conjugation with rights, was able to send about 70 Cape gauge coaches to Mozambique. 70 coaches भेजे rights ने और MCF में बना के, और 30 DMUs, 5 कोच सेट की 6 DMUs जिसमें कि मोटर और ट्रेलर कोच शामिल हैं, मोजाम्बिक को भेजे गए. These are the details of recent project. I am particularly drawing your attention to not other things. मोजाम्बिक को जो हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो करीब 40.92 मिलियन टन की थी फॉर 70 कोचेस, और इसमें एक कोच का कॉस्ट आप इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं कि 0.585 मिलियन टन आया. और ये लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर में भारत सरकार ने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की थी. उन्होंने एग्जिम बैंक के थ्रू फिर उसको अवेल किया और इसके अंदर 0.585 का कॉस्ट आया. और केप गेज अगर आप जानते हो तो ये छोटा होता है कंपेयर टू दी ब्रॉड गेज. सो कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट थोड़ी एडिशनल है, अदरवाइज मोस्टली ब्रॉड गेज कोच के आसपास इसकी कॉस्ट आनी चाहिए. और जो डेमो की कॉस्ट थी वो $25 मिलियन, करीब करीब 5 मिलियन पर रेक. ये थोड़े फोटोग्राफ्स हैं, ये डेमो के फोटोग्राफ्स हैं. डोंट वरी टू मच अबाउट दीज डिटेल्स. Only keep in mind that we have sent in, these are the recent cases, only last 3 years, we have sent 6 locomotives to Mozambique at a cost of about 27.34 million. हमें एक लोको में 4.56 मिलियन यानी कि 4 into 8 करीब करीब आप समझ लें 35 करोड़ का एक लोको पड़ा. लेकिन ये एक लोको की कॉस्ट नहीं है, ये इसमें सर्विसिंग, एक्सपोर्ट के लिए आपको जो फ्रेट पड़ता है, ओशन फ्रेट, वो बहुत सब्सटेंशियल होता है. इंश्योरेंस, वहां पे उनको बिड गारंटी देना, इन सब का कॉस्ट भी इसमें शामिल है.
वहाँ पे एक उनकी हम फैसिलिटी सेटअप करते हैं मेंटेनेंस की, इन सब का कॉस्ट शामिल है। लेकिन एवरेज पर लोको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि चाइना हमसे किस तरह compete करता है, वहां पे ये फिगर्स आपको काम आएंगी। 4.56 मिलियन पर लोको। ये जो BLW में लोको बने थे 2020, 21, 22 में गए हैं। ये सप्लाई ऑफ डेमो टू नेपाल बाय कोंकण रेलवे, ये कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट था। 2 सेट ऑफ डेमोज उन्होंने बनाए थे जो कि नेपाल सरकार की अपनी ग्रांट थी, और उन्होंने इंडियन रेलवे से सिंगल टेंडर बेस पे इच्छा जाहिर की। कोंकण रेलवे को बोला गया कि आप इस डील को निगोशिएट कीजिए। फॉर सम रीजन राइट्स वाज नॉट एबल टू पिच इन, सो कोंकण रेलवे पिच्ड इन, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच डेमो वाज 52 करोड़। इसमें एक एसी कोच था, 2 नॉन एसी थे, एक ड्राइविंग, और 6 कोच का ये सेट था। ये तो एक ड्राइविंग और एक मोटर कोच, और 52 करोड़ के रेट पे करीब करीब एवरेज 26 करोड़ पर रेक का ये कॉस्ट पड़ा। तो ये थोड़ी सी आपको पिक्चर देने की मैंने कोशिश की कि हाउ वी हैव परफॉर्म्ड इन लास्ट से अबाउट 50 or 60 years on the export front. Our record is not 0 by 0. We have something, but it could have been much more. And why we were not able to reach that much more limit, इसके ऊपर हम इतना अधिक क्यों नहीं बढ़ पाए, इस पे अब मैं आता हूं, जो कि सेक्शन का मेन मुख्य आज का मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। मोड ऑफ फंडिंग, यू शुड नो कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग किस फंडिंग के तहत पैसा कौन देता है इसके लिए, फंडिंग एक्सपोर्ट के लिए। तो एक्सपोर्ट का फंडिंग का 3 तरीके हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट, LOC प्रोजेक्ट जैसे कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब देखती है किसी देश के साथ हमें संबंध अच्छे करने हैं, तो ग्रांट भी देते हैं और सॉफ्ट लोन्स भी देते हैं। हमें अफगानिस्तान में रोड्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने काम किया है, बांग्लादेश में काम किया है, तंजानिया में काम किया है, मोजाम्बिक में काम किया है। कई सारे देशों को हम लोगों ने जो है वो ग्रांट दी हैं। हमारे भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको डिसाइड करती है और उन्हीं के बजट में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इसका जो रूटिंग होता है ये एग्जिम बैंक के थ्रू होता है। अगर उसने LOC दे भी दिया तो ऐसा नहीं कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कह दे कि आप सप्लाई करो। एग्जिम बैंक जो है अभी तक कंडीशन डाल रहा था कि इसको रेलवे की नॉमिनेटेड एजेंसी से ही हम लोग सप्लाई कराएंगे। तो ये एग्जिम बैंक एक उनके लिए एक फंड का एक अकाउंट खोलता है फॉरेन कंट्री के लिए। मान लीजिए बांग्लादेश को उन्होंने लोन दिया, बांग्लादेश के पास एक अकाउंट का लोन का अकाउंट खुल गया, और फिर बांग्लादेश रेलवे उसके ऊपर टेंडर जारी करता है, सिंगल टेंडर इंडियन रेलवे के अंदर जो भी PU नॉमिनेट होती है उसको, और उस जनरली राइट्स को करता था, कभी कभी दूसरों को भी किया है। तो उनको फिर नेगोशिएट करना होता है पॉइंट टू पॉइंट, और प्रॉपर एग्रीमेंट होता है जिसमें बिड सिक्योरिटी, वारंटी क्लॉज, गारंटी क्लॉज, ये सब आता है। जनरली ये लाइन ऑफ क्रेडिट में जब ऑर्डर्स होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ही मिलना है, किसी और को नहीं जाना है। हम लोग फिर PU से बात करते हैं, और प्रोडक्शन यूनिट जो अच्छा रेट या अच्छी कंडीशन है, जिसकी बहुत प्रोडक्शन बहुत टाइट ना हो, जो तैयार हो देने को, वो सप्लाई राइट्स को देती है, राइट्स फिर उसको आगे फॉरवर्ड करता है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो कि हमारे लिए मेन कंसर्न है, जहां तक अभी तक हम लोगों का रिकॉर्ड 0 by 0 था। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, our record was 0 upon 100. There the modes are two. One is that government which is importing the stock will either fund the project through its own resources, or it will approach Asia Development Bank, IMF, Africa Development Bank, any other multilateral agency for funding. So once it gets the fund, then it has to issue a tender, and tender is generally either open tender or limited tender, depending on the country's own security equation. Suppose some country says that I don't want to deal with India for some reason, today like Maldives is saying. So we may not get any tender there, but otherwise all other government funded, foreign government funded cases, we do get the tender inquiries. अभी तक ऐसा पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ कि हमें टेंडर इंक्वायरी नहीं मिली है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट रेलवेज भी चलती हैं बाहर, जैसे आप जानते हैं, जैसे इंडिया में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि पोर्ट रेलवेज हैं। कृष्णराजपुरम एक पोर्ट रेलवे है, कई अडानी की पोर्ट रेलवे है वहाँ पे मुंद्रा में,
ये सब प्राइवेट रेलवेज हैं, तो ये भी ऑर्डर अपने प्लेस करती हैं। एनटीपीसी है, पब्लिक सेक्टर में प्लेस करता है ऑर्डर। इस तरह के प्राइवेट फंडेड प्रोजेक्ट भी हैं, ये भी जनरली ओपन टेंडर के थ्रू ही बिडिंग होती है, और ये फॉरेन गवर्नमेंट की जो प्राइवेट रेलवे हैं हमें टेंडर भेजने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव, मैंने आपको लाइन ऑफ क्रेडिट के तो हिसाब किताब दे दिया पिछली 2 स्लाइडों में कि हमने कितने कोच भेजे, कितने लोको भेजे, कितने लोको भेज रहे हैं अभी, और कितने रिसेंट में भेजे। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जो दूसरी पहली 2 कैटेगरीज यहाँ बात कर रहा था मैं, ये वाली, जिसमें ये नंबर गवर्नमेंट एडेड प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फंडेड बाय रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय प्राइवेट एंटिटीज, इन दोनों में हमारा रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब रहा है। पास रिकॉर्ड में क्या रहा, मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के रिकॉर्ड में निकाल नहीं पाया, लेकिन टेंडर्स काफी सारे आए, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 2016 में बांग्लादेश रेलवे ने 50 बीजी कोच का एक टेंडर निकाला, और इसमें L1 निकला पीटिंग का। पीटिंग का मलेशियन फर्म, वेरी स्मॉल फर्म विच हार्डली प्रोड्यूसेस से 150 कोचेस 200 कोचेस पर ईयर, उसको ये ऑर्डर मिला करीब $5.39 मिलियन पर कोच का। और ये जो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे आज की डेट में तो करीब 4.5 करोड़ के ऊपर ये कॉस्ट, या 4.25 करोड़ जा रही है। ये इसकी L1 बिड थी, और क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी, हमारी बिड थी $6.35 मिलियन पर कोच, तो हम लोग करीब 17% ज्यादा थे, और इसमें शायद हम लोग L2 या L3 थे। 2018 में एक और टेंडर निकला बांग्लादेश में, और बांग्लादेश has been very kind and has been ready to accept Indian rolling stock, but you have to compete. That is what I was saying. You have to compete. So procurement of 50 BG luggage vans, the cost of CRRC Nanjing was about $4 lakh and $15,000. This is a simple luggage van. इसमें कोई फर्निशिंग नहीं, कोई अंदर का काम नहीं, केवल पार्सल वैन थी, और इसका हमारा ऑफर था $5 लाख मिलियन। तो आप देखेंगे हमेशा हम लोग अपने आप को आउट प्राइस करते रहे, हम लोग प्राइस मीट नहीं कर पाए। अगर आप प्राइस मीट नहीं करेंगे तो आप भी जानते हैं कि आप किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं अगर वो L1 नहीं है, और इसी तरह से दूसरी सरकार भी आपको पैसा नहीं देगी। और बोथ द कॉम्पिटिटर्स, वेदर इट इज पीटी इंका और वेदर इट इज CRRC नानजिंग, दे आर नॉट रेगुलर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बीजी कोच। ये लोग बीजी कोचेस बनाते नहीं है, हम लोग, जबकि हमारा काम ही बीजी है, हमारा दिन रात के हमारे खून में बीजी है। तो हम लोग तो हर साल 8,000, 6,000, 5,000 कोच बनाते हैं, लेकिन हमें वही कोच जो बना रहे थे वही देना था, लेकिन हम लोग compete नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा उसके लिए। ओके, स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इस पे आने से पहले एनी क्वेश्चन ऑन दी past records and the record on our competitive bidding strategy, जो अभी तक का रिकॉर्ड हमारा है, कोई सवाल? मैं इसलिए रुक रहा हूं कि कई प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं उसी समय और बाद में फिर निकल जाते हैं। एनीवन? Sir, while we are bidding and the rate is 18% and 21% higher, while bidding, are we aware कि what other bidders are going to bid? Are we doing a strategic planning before that, so that at least we compete? 18% and 21% between difference between the rates is quite high. Or are we taking it granted कि we will get? There is something like that which I feel in previous 2 examples. थैंक यू विजय जी। व्हाई वी आर बिडिंग, ये वही प्रश्न है अगर आप देखेंगे जो मैंने पहले कहा था, व्हाई शुड वी एक्सपोर्ट, शुड वी एट ऑल एक्सपोर्ट? द रीजन व्हाई वी गॉट दिस ऑफर वाज दैट द कंट्रीज आर रिलेटिवली सीइंग इंडिया एज अ पोटेंशियल सप्लायर। हम लोग बीजी को जानते हैं, बीजी कोच क्या है जानते हैं, उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस देखी है, वो आपको एक इंक्वायरी भेजते हैं। ये दोनों लिमिटेड टेंडर के केसेस थे, बट हम क्योंकि राइट्स में भी और इसमें इसकी डिटेल हम लोगों ने जब एनालिसिस अभी की लास्ट 1 साल में, और जो चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी किया वो उस पर मैं आऊंगा, तो हम लोगों ने देखा कि राइट्स भी और जो है पीयू
दोनों ट्रेडिशनल मैनर में ये सोच रहे थे कि हमको क्या फर्क पड़ता है। मेरे को लाइन ऑफ क्रेडिट में ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट चल रहे थे उस समय। हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें श्रीलंका में डेमो का, उसमें एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था ये तंजानिया में। तो राइट्स ने सोचा कि मेरा तो टारगेट मेरे को एक्सपोर्टेक को दिया 800 करोड़, 850 करोड़ कर रहा हूँ मैं, आई एम हैप्पी, व्हाई शुड आई बिड। पीयू को क्या था, पीयू ने कहा था हमारे तो टोटल प्रोविजन में 18% एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 10% प्रॉफिट, उसके बाद शॉप ऑन कॉस्ट मेरी जो 22%, ये सब मेरे अकाउंट्स ने लिख दिए 1 साल पहले, मैं तो इसको चेंज नहीं करता। Now both the factors combined together, and we saw that if we had actually done the costing which we were given to the Indian Railway, we would have still made very good profit. इंडियन रेलवे को आप कोच दे रहे हैं 2.5 करोड़ में, 2.25 करोड़ में, उसकी सर्विसिंग जाके करनी है तो भी हमको कॉस्ट जितनी पड़ती है। उस पर मैं आने वाला हूँ कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। बट व्हाई वी वर बिडिंग इन डिस्पाइट दिस इज बिकॉज वी वर एश्योर्ड ऑफ द राइट्स, वाज एश्योर्ड ऑफ द बिजनेस ऑन लाइन ऑफ क्रेडिट, एंड इंडियन रेलवे पीयू वाज एब्सोल्युटली हैप्पी कि साहब हम तो भारत सरकार का पार्ट है, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। दिस इज माय टेक। There could have been another reason. I was not there. My question was based on that. Yeah. Have we dealt the things professionally? Yes. So we have now changed the strategy, and next section is on this only. What has happened? So I think in another 5 slides you will get the answer. What has been done? You know your enemy and know yourself and can fight 100 battles without disaster. ये सुन त्सू करके एक चाइनीज फिलोसोफर रहे हैं 5वीं 6वीं शताब्दी में। उनका कहना है कि अपने आप को जानो, अपने कॉम्पिटिटर को जानो और आप 100 बैटल्स को जीत सकते हो। हालांकि ही वाज अ वॉरियर, ही वाज लाइक चाणक्य ऑफ चाइना, he was not a philosopher in the true sense, he was a warrior rather. But उनका कहना है कि अपने आप को जानो, अपने एनिमी को जानो। तो हम अपने एनिमी को जानते, एनिमी तो क्या कहूंगा, कॉम्पिटिटर को जानते हैं। Let's see what they do. And then lot of questions which were asked yesterday and today, I think you will get an insight into how CRRC functions. Our toughest competitor has been CRRC. PT Inca has also collaborated with CRRC in the past. So I see them as there is a kind of a cartel between them. Wherever they are bidding together. And one time one gets order, second time second gets order. So PT Inca is nothing but a extension of CRRC in a very rough sense, although not formally. So CRRC is your main competitor in all these bids where we have been losing. It is a state-owned entity, which means it's a part of Ministry of Transportation. Ministry of Railway वहाँ पे कोई नहीं है, but Transport Ministry है, और उसका part ये CRRC उसकी public sector undertaking है. It is one of the largest manufacturers of rolling stock in the world. Roughly 35.6 billion ton, करीब अगर आप लगाएं तो 2,80,000 करोड़ का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हमारे मुकाबले देखें, मैंने अपनी फिगर करीब 42,000 या 43,000 करोड़ बताई थी। So in terms of numbers they are about 7 times, but there is a catch. वो कैच में बाद में बताना चाहूंगा कि प्रोडक्शन के अंदर 7 टाइम्स नहीं है, प्रोडक्शन के अंदर वो आपसे 1.5 या 2 गुना ज्यादा है। अगर आप लोको 900 बनाते हैं तो 1200 या 1400 बनाते हैं। अगर आप कोचेस बनाते हैं तो कोचेस आपसे कम बनाते हैं। फ्रेट कार्स जितना आप बनाते हैं उतनी वो बनाते हैं। सो मोस्टली दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, बट व्हाई देयर कॉस्टिंग इज हाई, विल कम टू दैट, एंड वेयर दे आर deliberately keeping their cost low and how. They have about 1,83,000 employees. This is also including the workshops, because they have 42 units which were merged after public holding. That means the stocks, it is a publicly traded company. उनके स्टॉक एक्सचेंज में CRRC का स्टॉक अवेलेबल है। 40% पब्लिक होल्डिंग है, बाकी 60% गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास इसके स्टॉक हैं, स्पेस मिनिस्ट्री ऑफ चाइना के पास इसके स्टॉक हैं, और उनका बहुत मेरियड बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन रहता है। और इसमें जेपी सिंह गए हैं चाइना में, but I can say that it is very, very opaque and non-transparent way in which the companies hold the share of these public sector companies in China. Public holds 40%, 60% is held by cross-ministerial pool of banks and ministries. It was formed in 2015. हालांकि इससे पहले भी कॉर्पोरेशन थे, CSR, चाइना साउथ रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन एंड चाइना नॉर्थ रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन, इनको कंबाइन करके 2015 में ये बनाया गया। It not only does the production but also does the
मेंटेनेंस, जैसे आपकी पीओएच वर्कशॉप्स हैं उस तरह का काम भी करती है। प्रोडक्ट रेंज डीजल एंड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, जिसमें कि सबसे बड़ा इनका जो स्टार प्रोडक्ट है वो है हाई स्पीड रेलवे। 350 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 3 रेंज में ये बनाते हैं। इन्होंने बैक रिवर्स इंजीनियरिंग करके मित्सुबिशी और टीजीवी के स्टॉक को इसमें मास्टरी कर ली है। नाउ दे आर वर्ल्ड लीडर्स इन हाई स्पीड। फ्रेट वैगन्स बनाते हैं लगभग हमारे जैसे ही, ये प्रोडक्ट रेंज बाकी सब हमारे जैसा ही है, नथिंग ग्रेट, बट हाई स्पीड में दे आर मास्टर्स। पैसेंजर कार्स, अर्बन रेल ट्रांसिट, ट्रेन ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम, सिग्नलिंग इक्विपमेंट भी बनाते हैं, जैसे कि आपके रूट रिले इंटरलॉकिंग या फिर जो आपके सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये सब भी ये लोग बनाते हैं। और स्पेशल व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड माइनिंग, जिसका भी एक सेक्शन इनका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने का है, और ये मैं जो बता रहा हूँ ये रिसर्च पेपर वॉशिंगटन की एक स्टडी ग्रुप है जिसे कि राडर लॉक कहते हैं। ये कोई अगर ये रिपोर्ट पढ़ना चाहे तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर विथ यू, आई विल शेयर इट विथ IRIMEE, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट विथ द पार्टिसिपेंट्स। This is a report which was published in 2019, Radar Lock report, or this was research was done by Emily Brore, and she is a graduate from Princeton University, और एक नाथन पिकार से, ये जो हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये पोस्ट ग्रेजुएट फेलो हैं। इन्होंने एक स्टडी, और ये ग्रुप जो है जनरली चाइना के नॉट ओनली रेलवे बट इनके जितने भी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, वेपनाइजेशन प्रोग्राम, उनकी जो है वो इंडो चाइना इंडो पैसिफिक पॉलिसीज, इसके ऊपर ये स्टडी करता रहता है। इन्होंने CRRC के ऊपर स्टडी 2019 में की, और इट्स अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डाटा ड्रिवन, और ये डाटा कलेक्ट करता है। उनकी साइट्स बहुत ही मुश्किल होती हैं चाइना की, हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जैसे आपकी साइट से निकल जाता है कि आपकी बोगी में क्या कॉम्बिनेशन है, बोबो लोको है या कोको लोको है, आप चाइना की इस वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते। अगर उसका ट्रांसलेशन करें तो भी ज्यादातर चाइनीज में, बट स्टिल these people were able to find something. What does this report say? And this report is very startling, that it is there is a strong evidence of civil military fusion between CRRC, Belt and Road Initiative, and the operations of CRRC. Belt and Road अगर आपने पॉलिसी चाइना की पढ़ी है तो ये कंट्रीज को लोन देता है एशिया और अफ्रीका में, और इसका कहने का तो ये है कि सब चाइना को हम मिलाएंगे यूरोप से और अफ्रीका से, लेकिन एक्चुअली इट्स अ civic military geopolitical strategic program where it wants to make inroads into these countries. It is one of the most subsidized companies in China, करीब $800 million, करीब करीब अगर आप रुपए में लगाएं तो जैसे राइट्स को तो कोई असिस्टेंस नहीं मिलता है, लेकिन भारत सरकार से, बल्कि भारत सरकार को राइट्स अपना डिविडेंड पे करती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का अर्निंग हो चाहे रेलवे का, लेकिन या फिर कोई और पब्लिक सेक्टर भी डिविडेंड रेलवे को पे करती है। परंतु इस कंपनी को वहां की मिनिस्ट्री करीब करीब 6 से 8 हजार करोड़ का ग्रांट देती है। इसका जो डाटा ये कलेक्ट करती है, इट हैज टू मैंडेटरीली शेयर विद द PLO, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एंड द मिलिट्री एंड स्टेट अफेयर्स। CRRC runs government funded laboratories in the high speed railway. It's a high speed railway, तो चलिए इनका legitimate काम है रेलवे कंपनी का, तो हाई स्पीड की जितनी भी डेवलपमेंट चाइना में हुई है इसकी ये लैबोरेटरीज का भी ये रन करती है CRRC, और ये रेलवे इक्विपमेंट के लिए एश्योर्ड इसको बिजनेस मिला हुआ है फ्रॉम जितनी भी बेल्ट एंड रोड के तहत ग्रांट्स ये कंट्रीज को देता है। पाकिस्तान को उन्होंने करीब $35 मिलियन दिए, अफ्रीका में कई कंट्रीज को दे रहा है। इन सब कंट्रीज में जब वो लोग रोलिंग स्टॉक खरीदेंगे तो CRRC के पास ही आएंगे, या माइनिंग स्टॉक खरीदेंगे तो CRRC के पास आएंगे। तो इसको एश्योर्ड बिजनेस मिल रहा है इन सब जगहों से। और जबकि MEA ने पॉलिसी निकाली है कि कोई भी नॉमिनेशन बेसिस पे गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं दिया जाएगा टेंडर, ये अब जितनी भी एग्जिम बैंक ग्रांट भी देता है उसको अब ये लोग ओपन टेंडर कर रहे हैं। सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। It partners with Huawei. Huawei is a communication system, communication supplier. इसने 4G, 2G, 3G सप्लाईज करने की 5G में भी ट्राई की थी, नहीं आया। तो Huawei का ये नॉन रिकॉर्ड है कि यूरोप में और इंडिया में और जहां भी ये गया है, इसने अपने इक्विपमेंट जितने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देता है, जैसे कि
कम्युनिकेशन के जो आपके इंटरचेंजेस हैं और जो जो सैटेलाइट इंटरचेंजेस हैं उसमें अपनी इम्प्लांट डिवाइस करता है ये. Those devices are able to communicate with the Huawei Center और इसने कई बार फ्रांस में शटडाउन करवाए हैं उनके लोको सिस्टम, उनके पावर सिस्टम्स. हुआई का ये नॉन रिकॉर्ड है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इंडिया में हुआई को बैन किया था और 5G में नहीं घुस पाया. लेकिन इसका CRRC का हुआई के साथ टाई अप है. बीडू ये बायडोल करके इनकी चाइनीज स्पेस एजेंसी है, उसके साथ इनका टाई अप है. और ये टाई अप रेल कंपनी का क्यों होगा? इसीलिए कि जहां भी CRRC को ऑर्डर मिलेगा वो जाएगी, उसको डाटा देगी, उसके बदले में उसको कुछ ग्रांट मिलेगी, सब्सिडी मिलेंगी. तो ये कितना ज्यादा उनका इंटरकनेक्शन है इन दिस इज नॉट प्योरली रेल बिजनेस. दिस इज बेसिकली they want to make inroad into the geopolitical security system of those countries where they want to enter. And that is why, my friends, when we say that China सब जगह क्यों घुस जाता है, इस सबको हमें ध्यान देना पड़ेगा. Now the executives at CRRC we are dual hats. They are Communist Party office bearers also. CRRC का जो CMD होगा या जो उनका चीफ होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का भी रेगुलर मेंबर होगा. वो टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन इन्होंने GMG कई लोगों के साथ इन्होंने TOT किया है, जो कि ठीक है, रेलवे बिजनेस में तो करेंगे. लेकिन इसके साथ साथ R&D सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्होंने एक्वायर किया है. स्पेस इंडस्ट्री के साथ इनका टाई अप है, जो कि थोड़ी अजीब बात है. क्यों? व्हाई इट इज हैपनिंग? एंड डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट विद PLA एंड CCP इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. एंड दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड. इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इस राडर लॉग रिपोर्ट के, आप पढ़िएगा डिटेल्स में. बहुत करीब 22 पेज की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट आउट प्राइजेस इंडियन प्रोडक्ट. जहां पे भी इसको सेल करना है, इसको अगर पता है कि इंडियन बेंगलुरु मेट्रो में इसने बिड किया, इसको पता था कि इंडियन कंपनी 4.5 या 5 करोड़ में स्टॉक देनी है, तो इसने उसको 4.25 करोड़ में स्टॉक दिया. मुंबई मेट्रो में इसने इनरोड किए. और लेटेस्ट इसने जो है वो कोलकाता को रेक दिया है. और इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है CRRC की जो CCRC जो चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने दिल्ली मेरठ जो हाई स्पीड कॉरिडोर, ये सॉरी RRTS कॉरिडोर है, उसमें इसने अपनी बिड लोएस्ट रखी. सो इट इज सब्सिडाइज्ड and that is why it is able to outprice all other competitors. Geopolitical threat, once it enters a country, as I said, it is not only, and this is a Picasso report, this is not my finding, and we had a very strong suspicion when we were in Ministry of Defense. And Ministry of Defense में जब डिफेंस क्लियरेंस के लिए केसेस आते हैं, तो डिफेंस क्लियरेंस में हम लोग जनरली चाइनीज कंपनीज के ऊपर रेड फ्लैग करते थे कि इसको नहीं घुसने दीजिए बॉर्डर एरियाज में. तो सिमिलरली जब भी ये किसी आसपास के देश में घुसेगा, तो इट विल ट्राई टू मेक इनरोड्स इनटू द सिक्योरिटी सिस्टम एंड आल्सो कीप अ आई ऑन इट्स कॉम्पिटिटर लाइक इंडिया, नॉट फ्रॉम रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू. With inroads in Indian market, it has been able to enter the metro sector. Indian metro sector में CRRC ने inroads किए हैं. बेंगलुरु मेट्रो जनार्दन साहब ज्यादा जानते होंगे, but Bengaluru Metro, because we were under the obligation of making the open tender under WTO agreement, we could not stop China. Although there were a lot of concerns, but they were able to make Mumbai Metro inroads. They supplied rake, they supplied in Kolkata, they supplied in Bengaluru. So there's something for which we should not be worried, not as a railwayman, but as a countryman. So having recognized all this, any questions before I proceed? Because what is the change in strategy which we have done in last 2 years? I want to come on that after this. Sir. I was going to ask you about the Bangalore Metro, but let me tell you, Chinese strategy is not new. Yes, sir. Way back in 2002, I was posted as CME at Railwheel Factory. Graphite electrodes for the electric arc furnaces, they are a major consumable. We started getting them from China. Quality was poor, but they made sure price-wise they were 10, 15, 20% cheaper than what you are getting in the country with foreign collaboration. But ultimately, to cut a long story short, now they are one of the principal suppliers of electrodes. They've improved their quality, but the prices are still low. Yeah. And the reason I learned now, I mean, we had the suspicion is
opaque system of accounting. The second question or observation I had is, they have the CRRC now. Why can't the Indian Railways corporatize on similar basis the PUs and the workshops? Is it because of our silos, or we can't? That's Hello. Sir, as you rightly said, Chinese have, after 1989, have changed their strategy and tried to now enter the global market. Initially, it was an economic policy, because under Mao Zedong, they were under the economically, they were as bad as India, if not worse. They were not more progressive till 1970, more than India. हमारी per capita, China की per capita same थी. जब उन्होंने change of strategy की है 1980s में खास करके, their initial target was economic growth of their population, but ultimately they realized that because of the opaqueness in their system. Now, sir, what I'm coming to your point is कि when they underprice their product in a competitive bidding, at the same time when they are supplying in belt and road program, their product is overpriced. So इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारा उनसे volume in terms of revenue is they are 7 times, whereas in terms of production they are only 2 times. तो कहाँ से पैसा निकाल रहे हैं? वो जब अपने कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं और किसी, आप मान लीजिए बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम में पाकिस्तान को एड दे रहे हैं या किसी युगांडा को एड दे रहे हैं, तब वो अपने प्राइस को और अंडर प्राइस नहीं करते हैं. दैट टाइम दे रिकवर दिस अंडर प्राइसिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. सो दे क्रॉस सब्सिडाइज एंड देयर प्योर टारगेट इज टू पेनिट्रेट अ मार्केट व्हाटएवर मे कम, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राइड टू स्टडी. एंड मेरे को रेलवे बोर्ड में बहुत कहते हुए खुशी हो रही कि एएमपीओ साहब थे, इनके आशीर्वाद से एक अभी चेंज हुआ, और उस चेंज का क्या इफेक्ट निकला ये मैं अगले स्लाइड में बताना चाहूंगा. एंड जो है दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि सर, फर्स्ट वाज अबाउट दी दिस थिंग एंड CRRC equivalent. Sir, AMPO is the right person to answer, but what I know is that the Deloitte report. Yes, sir. Sir, understood. Understood. So the sir, would you like Deloitte एक report थी, please? एमपीओ क्योंकि अभी इस पॉलिसी से बहुत जूझ रहे थे पीछे, अभी तो इलेक्शन टाइम है तो शायद उन्होंने नहीं किया होगा, बट पीछे बहुत बड़ा सवाल आया है. No, this corporatization of PUs, sir, is still one of the objectives of Government of India. And we keep on replying that we are educating, we are having deliberations internally, and we are educating our employees and unions on the benefits of this thing. So it is still one of the objectives, but its priority is not that much now. Thank you. Thank you. ये सोचा तो गया ऐसे कॉर्पोरेटाइजेशन, बट उसको लाने में, फ्रुक्टिफाई होने में कितना समय लगेगा, वी डोंट नो. Okay, change of strategy. Now, lot of things happen, and I am standing our response, Indian Railway response, and the rights response to this. I'm very happy to state that when in 2020, and IRIMEE has a very major contribution in this policy, we were asked to, COVID के दिन थे, ट्रेनिंग बंद हो गई, तो जैसे कल साहब कह रहे ट्रेनिंग कराओ, तो ट्रेनिंग में लोग नहीं आ रहे थे, तो रेलवे बोर्ड ने कहा कि आप इंडियन रेलवे कोड को क्यों नहीं मॉडिफाई करते. तो जेपी सिंह हैं, वेंकटेश थे, और भी हमारे साथ के कई साथी थे उस समय के, तो वी वर टोल्ड टू मॉडिफाई द कोड. Now in 2020 July, we sent a modified code in which the chapter on costing in competitive environment was incorporated. Secondly, marginal costing and what we call as the cost competitiveness. These concepts were analyzing the, what Vijay said, analyzing the cost before filing a bid. These have been made mandatory. I'll not go into, I have the complete code with me, those relevant portions. I'll try to give it to you. But what this says is that where the case is likely to be, these are only the key point I'm trying to reiterate, is the case where the work is likely to be awarded on a single tender basis or on a departmental basis, like postal vans or defense vans. You do the normal costing. आप on cost भी जोड़िए, profit भी जोड़िए, उसके अंदर shop on cost जोड़िए, एक आध कंप्यूटर जोड़ना है जोड़िए, जो करना है करिए, जैसे आप करते रहें. But when this new para which has been added is, if the railway directly or through the PSU
has to offer price in a competitive bidding, the cost of product as well as the market price and cost of the competitor should be analyzed in writing and price decided beforehand. Discounts can be offered ड्यूरिंग इनिशियल बिडिंग और आफ्टर इनिशियल बिडिंग. ऐसा नहीं कि पहले आपने कर दिया तो मैं चेंज नहीं करूंगा. तो ये कोड आपको परमिट कर रहा है. और जीएम ऑफ द पीयू इज एम्पावर्ड टू, और ये बहुत बड़ी पावर है, अभी तक नहीं मिली थी, डिडक्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, वेविंग ऑफ कॉन्टिजेंसी एंड वारंटी चार्जेस, वेविंग ऑफ पेंशन फंड. ये सब एडिशनल कॉस्ट हैं जो कि आपको मिले या नहीं मिले आपको देनी पड़ेंगे. तो ये कॉस्ट हम एक्सपोर्ट में क्यों लोड करें. तो ये सब जो थॉट गई थी, ये एएमपीयू साहब के आशीर्वाद से ये कोड 2022 में पास हुआ, जो 2020 में मेहनत की थी 2022 में पास हुआ. और इसका क्या असर पड़ा. बिफोर द चेंज मैंने आपको बताया हम लोग 17% हाई थे. अब ये सॉरी, अब इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखें और आपने जो प्राइस नोट किए होंगे अपने दिमाग में. हम लोगों ने 2023 ये अक्टूबर 2022 में क्लियर हुआ. उसके बाद जितनी बिड भरी हैं हमने, 5 बिड राइट्स ने भरी हैं, इसमें केवल एक में हम लोग L2 रहे हैं. नाउ द चेंज वेयर वी वर नॉट विनिंग एनीथिंग फॉर लास्ट से 74 से लेके 2022 तक का कितना समय हो गया, करीब 44 साल या 54 साल जो भी हैं, उसमें जबकि हमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कुछ नहीं मिल रहा था, बट हैविंग just one in code and that code was accepted by our production units. Our PUs were very open to this, and when they read that they have been permitted, they openly have agreed to reduce the cost. We have only lost one tender in to CRRC. All other tenders we have been able to beat CRRC or the WebTech which is come in our direct competition. तो जो मेरे साथी का प्रश्न था कि हम लोग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं और बाहर वाले क्यों जीत लेते हैं, इसका कुछ हल तो मिला है. ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से खामोश हैं और कुछ हमें नतीजे मिल रहे हैं. जैसे कि आप देखेंगे CF एक हमें लोको का CFM मोजाम्बिक को मैंने आपको बताया था 6 लोको दिए जिसका एवरेज प्राइस था $4.53 मिलियन. अब हमने जब कॉस्टिंग रीकॉस्टिंग की तो हमें 10 लोको में $34 मिलियन में, यानी कि $3.4 मिलियन पर लोको. और ये लोको से लोको कॉस्ट नहीं होती, मैंने आपको बताया इसमें फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सर्विसिंग देयर, सेटिंग अप अ शेड देयर, प्लेसिंग अवर पीपल फॉर 2 years, ऑल दैट इज इंक्लूडेड. 3.4 बिलियन करीब हम लोग पिछले 3 साल के अंदर प्राइस को करीब हम लोग आप कह सकते हैं $1.2 मिलियन घटा पाए पर लोको विद द हेल्प ऑफ BLW. अगर आप बांग्लादेश रेलवे 200 कोच का ऑर्डर मिला है, 1100 मिलियन में 200 कोचेस, पर कोच की कॉस्ट आ रही है 0.55, जबकि पहले हमने लगेज वैन के लिए कोस्ट किया था 0.5 मिलियन और नॉर्मल कोच के लिए 0.60 मिलियन हमने कोट किया था आज से 6 साल पहले. तो डिस्पाइट प्राइसेस इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द करेक्ट प्राइसिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर स्टिल नॉट गेटिंग सब्सिडी, बट जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोविजंस एंड नॉट लोडिंग योर, आपकी स्टाफ की बिल्डिंग का कॉस्ट या आपकी पेंशन के फंड को नहीं लोड करने से ही इतना फर्क पड़ गया है. So now, in fact, Chinese are worried after this results which have come in last 3 or 4 biddings. So we have got success. It's not that we are not there. I'll just finish by a note of caution. Despite these successes, we are sure that if we continue to get support from PUs, we'll be able to make a good inroad into exports. Way forward is not easy. Area of concern is quality. क्वालिटी में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा जो फीडबैक बांग्लादेश ने दिया और दूसरे कंट्री ने, कि आपका फील एंड फिनिश बहुत पुअर होता है. आपकी कार जब आती है इंडिया से इंपोर्ट होके तो उसमें 12-12 साल पेंट नहीं करना पड़ता. कोच आता है तो 2 साल में उसका पेंट उतर जाता है. तो फील एंड फिनिश, दैट इज योर बर्थ, सीट्स, टॉयलेट्स, पेंट एंड जो कल PCM कह रहे थे सरफेस. इसके अलावा जो नीचे का जो सिस्टम है, CBC, अंडर गियर, they have no complaint. They are in fact saying कि सब चाइनीज कोच आया था 2020 में, ऑलरेडी उसके स्प्रिंग डैशबोर्ड से निकल जाते हैं और हमें ट्रबल हो रही है. We have no complaints on your bogie. So the quality we have to improve in feel and finish. पहले देखते ही उसको लगे कि कोई बढ़िया कोच आया है. पावर पैक परफॉर्मेंस लोकोमोटिव में ट्रबल रही है, टर्बो चार्जर और क्रैंकशाफ्ट की. टाइम शेड्यूल एक बहुत बड़ी कंप्लेन रही है हमारी कि हमने 2 साल में प्रॉमिस किया लेकिन पीयूष ने कहा हमें तो मिनिस्टर ने कह दिया वंदे भारत बनाओ, तो आपका कोच अब अगले साल बनेगा. दिस इज अवर बिगेस्ट ट्रबल व्हिच ITES इज फेसिंग.
हमें ना केवल एलडी लगती है, लेकिन जो हमने प्रॉमिस किया था अपने फॉरेन क्लाइंट को, वो मिस करते हैं। जबकि सीआरआरसी फॉरेन क्लाइंट्स को पूरी प्रायोरिटी देता है, वो पहले उसका माल बनाता है, तब हमारा अपना बनाता है। Mindset, some clients are still not ready to believe that CRRC is out, although they are happy, but it is the time for India. Mozambique gave example कि CRRC अभी भी अपने गेम्स को खेल पा रहा है। मोजाम्बिक में मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बताया था, we were, I'll just show you this slide. There's one particular how big this issue has become. I just want to, इसमें आप देखेंगे CFM मोजाम्बिक का सीरियल नंबर 2 देखिएगा। CFM मोजाम्बिक 300 वैगन्स, हाई साइड वैगन, हमारा ऑफर था $23 million फॉर 300 वैगन। ये हमने जुपिटर वैगन के साथ मिलके कोट किया था, क्योंकि रेलवे के साथ हमें नहीं मिल रहा था कोट, तो जुपिटर वैगन के साथ मिलके कोट किया था। और जो सीआरआरसी की कंपनी है उसने 26 मिलियन किया था। डिस्पाइट दिस द ऑर्डर, बिकॉज ऑफ द, दे सेड कि साहब अपने लोगों तो इंडिया को दे दिया, तो वैगन हमें दो। They arm twisted the country, and the result is that I don't know whether it was arm twisting. It is wrong for me to say in this public platform, but there's something happened where, despite being L1, we were not given the final order. Final order went to China, despite them being L2. So some countries are still not able to accept that you are now competing with them. Way forward, these are some of the, I'm not going to elaborate on this, some of the suggestions which we have to improve the quality, do the right production costing, marginal costing, opportunity cost. All this we have done, and that is why we are getting the results. And finally, these were the reports which were sent to Railway Board. When I was in IRIMEE, the codal changes were sent and they accepted. And later on, when I was in NIR, we were holding regular seminars on export policies. And some of these changes have been accepted by Railway Board. We are very thankful to them, thankful to MPO. So I end by this quote of Winston Churchill that those who do not learn from history are doomed to repeat it. तो अगर हम सीख पाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे और अपना जो माइंडसेट है उसको पुराने टाइम में रखेंगे, तो हम लोग यहीं जहाँ पे हैं वहाँ पे तनख्वाह तो मिल ही रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। Thank you. I end my statement. Sorry, I have taken about 20 minutes extra. So, done. Any questions? लास्ट में तो क्वेश्चन रहेगा क्या कि why export? अगर आप नहीं पूछेंगे मैं आपसे पूछूंगा why export? हाँ, sorry, I have my 1 year gone. Yeah, most of the market that we got it, sir, in the far eastern areas or Asian countries, Mozambique, Tanzania, Thailand, Nepal, Bangladesh. If our quality is good and we are in a position to compete in the market, why we are not penetrating the market of European countries and those developed countries, if we are claiming that our technology and our engineers are quality one, and we are really supplying the very good materials. The reasons is that we have more focused to the Chinese market. Why we are seeing that the China is the only competitors of ours. Why we are not saying and we are not going for that, the French, the German, the English, all these countries, why we are not taking the market of theirs if our quality is very good? Thank you. So your question is that if I am saying that my quality is so good, why I'm not penetrating? I never said that our quality is very good. I said that our quality is not so bad as it is perceived to be. There are other reasons. Number one. Number two, when you talk about penetrating European market, even Chinese have not been able to penetrate European market. There, the market is dominated by the private players, Alstom, Mitsubishi, Bombardier. So these companies are not allowing China to enter Europe.
despite China having so much of investment done in the high speed. One reason is geopolitical, because Europe understands that if they allow China, their systems are in for a toss. They will be exposed, and there have been frequent attacks on the French power systems, in Italian power system. There are many cases where they were able to disrupt these systems because of the Chinese penetration, Hawaii basically getting the orders. So if you have to compete in Europe, first you have to develop the standard gauge. We have not done any work in standard gauge. Direct answer is one. If we can do the standard gauge, believe me, giving a good paint finish is very easy. मेरी कार कंपनी मारुति की 15 साल तक कार खराब नहीं होती है पेंट में, और हमारी कार जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, इटली में भी हो रही है, फ्रांस में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है. एंड दोस पीपल से कि साहब आप गाड़ी में इतनी अच्छी पेंट कर ले तो इन्हीं को पकड़ लो ना, ये आपकी कोच भी अच्छी पेंट कर देंगे. गेटिंग अ गुड पेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम. गेटिंग अ गुड बर्थ इज नॉट अ प्रॉब्लम, एज प्रूवन इन वंदे भारत. वो बर्थ आप जब LHB में जाएंगे तो इधर से आपको टेढ़ी मिलेगी कटी हुई, वंदे भारत में सीधी मिलेगी. Peel and finish items are not difficult, although we have not yet done it. We have to do it. As I said, की challenge है हमारे लिए. लेकिन जो असली चैलेंज है वो है स्टैंडर्ड गेज. जिस दिन आप स्टैंडर्ड गेज में पेनिट्रेट कर जाएंगे, इंडिया की रिलेटिवली बेटर ग्लोबल स्टैंडिंग और हमारी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के चलते, I can tell you where they are stopping China from entering, they will welcome you if you can give a good price. This is my belief. But first make standard gauge rolling stock for them. अभी तक आपने नहीं बनाया. Yeah, okay, it's live now. See, I think we must have the courage to look at hard facts. I worked in RCF, I worked in WAP, I worked in workshops, Jamalpur, New Bangaigaon winner. What I saw in Dibrugarh, for example, Matunga, I mean, I've not worked in Matunga, but I've been to many workshops. What is our work culture? If your workforce is not going to be available for half a day, for the best part of the day, especially the second half, if you concentrate only on a day to, you'll find in RCF, for example, coaches to be turned out that day. It's like a beehive. You just can't have place to stand. So where will you have the quality, sir? This is something we have to ask ourselves. Not say why China can get a better finish, why Maruti is giving a car with a better finish, and we can't do it on a coach. That is one. Second thing I feel, we have to understand, even for a metro coach, we had the opportunity. I remember when I was CME RCF, for the first time, Delhi Metro wanted broad gauge metro coaches. And a GM of RCF signed an MOU with Siemens. But we were outbid by BML. And thereafter, all the metro orders have either gone to the public sector, BML, with some collaboration with Japan and Korea, or to the Chinese. So why can't we? Of course, now you would say that the metro coaches of today are standard gauge. So this is my observation. And Belt and Road, the smarter countries have realized that it's a death trap, DBT for them. Italy has walked out of it. The present government of Italy have thrown to the Chinese. So we must, and lastly, after going through what this report you displayed, why can't this be studied by the government of India and they asked to cross-subsidize our rolling stock exports in a similar manner? Yes, sir. Sir, I take your question in three parts. And for last part first, why can't we suggest to Railway Board? We did suggest to Railway Board that like PLI, Productivity Linked Incentive Scheme, is being given to mobile operators, computer operators, toy manufacturers, and they have been able to cut the imports. Not only cut the import, now mobile has started getting exported. China से import होता था, export हो रहा है. तो रेलवे को भी strategic sector मानते हुए आप दें हमें subsidy, number one. And this suggestion has gone to Niti Aayog. In fact, a meeting has been called by Niti Aayog with our CMD.
It was last week supposed to be held, but has been postponed. If they give a time, we are pressing for a export linked incentive scheme for railway sector, not PLI, but ELI. So this is one part. Second part, so I hope this government is very progressive. If they accept the suggestion, if we get 3 or 4% subsidy or 5%, we'll be able to do well on the costing. Second part, the work culture. So work culture changes our area. I'm now out of system, but if I don't talk about Six Sigma and Lean, then and I have to tell my people कि Six Sigma कैसे आपको implement करना है, और लोग कहेंगे सर रेलवे वर्कशॉप में तो हो ही नहीं सकता है. मैं नायर में सर पढ़ा रहा था, और दिस वाज अ चैलेंज थ्रोन टू मी बाय नॉर्दर्न रेलवे ऑफिसर, वन ऑफ देम डिप्टी सीएमई. मैंने कहा अपनी एक वर्कशॉप का मेरे को एग्जांपल दीजिए, एंड दे गेव मी जहाँ पे सिक्स सिग्मा नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है. सो दे गेव मी वन प्रोजेक्ट फॉर जगाधरी वर्कशॉप. हम लोगों ने किया, उनका जो आउटटर्न था उसका जो साइकिल टाइम सर वो करीब 450 कोच के लिए 700 कोच होल्ड करके रखते थे. That cycle time came down to their holding, monthly average holding came down to 350 by adopting the lean. So we have to believe कि we can improve culture. ये हम में से हर एक जो बैठा है, अगर ये बिलीव करता है कि मैं अपने मेरे साहब कहेंगे तभी नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि ये गलत माल निकाल रहा है तो इसको पहले ठीक कर, तब तो हम लोग इसको कर पाएंगे. तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ यू and each of I'm out of system, but I'll be very happy to take any session on Six Sigma, and it is very easy to implement. It has been implemented in railway workshop. Railway factory, somebody was there, RWF. It has been implemented in one of the shops in RWF, Six Sigma, and I was told by Mr. Venkatesh, who went from here, that they have done it. So it is possible, but areas are so many. So आप quality अगर assure करेंगे, सिक्स सिग्मा के टर्म्स में सोचने लगेंगे, तो क्वालिटी अपने आप आपकी आपको स्टैटिस्टिकली सोचना है. ये नहीं कि मेरा अगर इंसेंटिव बन गया तो खत्म है. आपको ये सोचना है कि मेरे फेलियर्स के कितने रिपोर्ट वापस आए. अगर एक एक्स्ट्रा आया तो मेरे लिए शर्म की बात है. वो कैसे होगा मेरे को नहीं पता, बट इट इज अ कंबाइंड एफर्ट एंड अ क्रिएशन ऑफ अ आई वुड से जिसको कहते हैं एक वॉल्यूम और मास में क्रिएशन होना है. And your sir first question was about the quality के आपके दो issues थे. Indian industry में quality consciousness auto में बहुत ज़्यादा बढ़ी है. If we can learn from auto industry, we'll be greatly benefited. This is my belief. Thank you. Can I finish? किसी को और प्रश्न पूछ सकते हैं? कॉपी मेरे को थोड़ा डाटा निकाल के दूंगा. I'll do. इसके अंदर थोड़ा डाटा हम लोगों को परमिटेड नहीं है, तो I'll remove the data and give it to you. Thank you very much, sir, for a fascinating lecture. You packed a great deal into a relatively short time span, and in the hour that remains, we shall now proceed with the rest of the program. But thank you once again, sir. We are all fortunate to be in an audience for you today. Due to paucity of time, we were unable to accommodate a second speaker that had been planned for today, Mr. Abhay Gupta from Northern Railway, to talk about hydrogen fuel cells and their application and scope in the railways. So we shall hold another seminar on this topic in the near future as part of the IRIMEE Annual Day Lecture Series of 2024. And I request all of you present to please make a note of it and join what I promise will be a fascinating and absorbing session. So with thanks once to Yagnik sir, this brings us to the close of today's seminar. Thank you, sir. We shall now proceed with the presentation of our annual report. I now request our Additional Director General IRIMEE, Mr. P. Ravi Kumar, to kindly address the gathering with the presentation of IRIMEE annual report. Is it? No. This is not that. लगना पड़ेगा ना? लगा दो. Just take a time. 2 minutes. Escape करते हैं. Stop it.
Yeah, I'll do that. Good morning to all. On behalf of IRIMEE, I heartily welcome all the distinguished guests from Railway Board, Eastern Railway, headquarters, workshops, and all the trainees, awardees, faculty, staff, and representatives of the press and media. I extend special felicitation to our chief guest, Sri R.K. Mangla, AMPU and AMME Railway Board, who has honored us with his presence today. Because Gautam Datta had to go back, so he was unfortunately not there, PCME Eastern Railway. And we have amongst us Colonel Arun Bhagra ji, who has been the ex-director of IRIMEE and also retired AGM of South Central Railway. And we have amongst us Mr. S.K. Yagnik, ex-director IRIMEE and also COFM Nair, who have graced the occasion. It gives me immense pleasure and pride to present before you the 97th annual report of IRIMEE for the financial year 23-24. As you all know that IRIMEE has the oldest training institute, and we had a very illustrious journey right from 1888. And now as we stand here in 2024, where we have IRMS training planned in this year, and then we also have training planned up for the government of Bangladesh as well as government of Nepal. These are the typical milestones we have. So I'll just not read everything. The critical thing is in 1974, we have been rechristened as IRIMEE. And then we have got the status of the CTIs, centralization of IRSME probationary training. But now we don't have the IRSME cadre anymore. So we now have the IRMS cadre, which will be soon starting this year. And the schedules we have given, interacting still with board has stated, approve the training program schedules of IRMS. The Bangladesh and Nepal railway officials is somewhere in the annual, and actually it was supposed to start in 23 itself, but due to certain technical issues, it's, I think, going into 2024. We have a number of training activities scheduled up, lined up for this year. And as usual, as we do train the stream of rolling stock engineers and the chemist and metallurgical cadre of Indian Railways. And we have training for the officers, probationary officers, in-service officers. And for the supervisors, the chemist and metallurgical cadre and the JEs and SSCs are trained here. For the non-railway customers, we do have HPCL coming, rides coming, KRCL, dedicated freight corridor, etc. And for the foreign government officials, the government of Nepal and the Bangladesh Railway is now right in the anvil. And this is a beautiful photograph of the presidential visit of the batch of the UOL of 2019 batch, the last batch which has passed out. This is also another interesting photograph which depicts the batch in front of the Rashtrapati Bhavan. And the probationers training, again, IRSME is no longer there. We have now the schedule of IRMS. We have a one-week appreciation course of all the services. Similar kind of thing will also be there with the IRMS students. The 7-week comprehensive training of IRMS probationers in the courses of Nepal and Bangladesh Railway. Certain new courses we have tied up this year on the AI and machine learning. And we also tied up with the Agricultural University at Sabhor
We're having a 1 day module on the plant phytology and plant life, which we engineers are lacking. And since ENHM has become the mainstay of our rolling stock department, so we hope to impart certain knowledge on how to grow trees and what type of trees to grow where. We're also going to shortly do something on the MTech program on AI and robotics with tie-up with IIT Patna. There are certain glitches. It will take some more time as it appears. Then we have a very core subjects which we are training. Basically, the coaching and freight stock of IR, the Vande Bharat and the distributed rolling stock, the diesel locomotives continues to be the only house where we train people. Apart from the IR personals, we have a lot of rights personals and a lot of other PSUs coming up to us and asking us to take courses on the diesel locomotive. And in fact, the Nepal and Bangladesh Railways also will be coming to us for the same diesel locomotive training. And we have started a course on ENHM, as environment and housekeeping, and the workshop manufacturing technologies, engineering materials, safety management and accident investigation. And let me also tell you, apart from just this safety management and accident investigation, all the courses have a lot of component on safety. In fact, the entire coaching, rolling stock, Vande Bharat, every course deals with it. Almost an 80-92% of the content deals with the safety. Even the upholsteries and the furnishings are all highly contributing towards fire retardancy. And there's a lot of safety aspects in every bit of the courses what we're planning. The tenders, contracts, the planning and budgeting courses we have introduced. The information technology, mechatronics, IoT, and soon we'll be doing a course on AI and machine learning too. Apart from that, we organize a large number of seminars and workshops on the subjects of current importance of zonal railway and PAUs. These are some of the special courses on topical interest as we get the feedback from the field, from the various CMEs and CWMs. I keep interacting, and my officers also keep interacting with them. And even the coaching depot officers also give a lot of vital feedback on most of the courses. And the trainees themselves keep giving me a lot of feedback, on which we have also enhanced a few courses from 1 week to 2 weeks, a few of them. So these are the various topical interests which goes all around the year, and the calendar is published somewhere in March or April, the beginning of the year, and it is published on the IRIMEE website. These are the courses on, and on the digital learning initiatives, we have gone a big way in doing all the online paper examinations, which is probably the only CTIs who does the entire online paper examination. And not only it's an online examination, it's also evaluation online. So that's the interesting part of it. And we have, during the COVID time, we have done a large number of online courses. But after the post-COVID, we have now switched over to 100% offline, barring 1 or 2 courses which still go online because the faculty not able to come over and hear me, because we do a course on IT portals where the CRIS faculty are the persons who take up. We almost have to engage about 5 to 6 faculty from CRIS who find it difficult to come, but it should not be a problem once we are able to get some airport kind of connectivity in Bhagalpur, which I think the local Udan scheme and as announced in the latest budget, there's a lot of emphasis on air traffic. So and this year we have upgraded all the servers almost. There were 3 servers which deal with the virtual classrooms and the training management system and the RSKR. We have upgraded all of them to new servers, and one of the websites was posted by an Ahmedabad firm which will soon take it over in our servers because there has been a data breach lately. So we now also moving towards 100% switching over to IRIMEE servers. Now we have an e-learning platform, that is the Moodle, which is an open source running on captive servers. Virtual classrooms, open source, again running on captive servers. IGOT is a new thing which we're going to do it, where we'll be hosting a large number of self-learning modules on the IGOT platform of Government of India.
where anybody can access that and do the course. And it's a self-paced learning modules, which is soon we are working on it. Now, in the network, we have a training management system, the learning management system where people register for the online courses. And then you have a knowledge bank, which is an RSCAR, where we have a lot of resources like the linkage, the hyperlinks to this is here. You can make use of it. And if you still want, we can also, we'll put this on the website also. And we'll also pass it on to you, sir. Then we have the learning management system, again, the virtual classrooms. We can have multiple classrooms, as you can see, and join any classrooms. And the RSKR portal has more than 1400 modules, 147 short videos, 22 recorded webinars, 119 recorded lectures, the discussion board and forum for the website on trainees. And even this session is being broadcasted on live, the YouTube channel, through our servers. This is again the same thing, what is on RSKR. We have certain interesting videos like how to negotiate curves and things. A lot of it is there. It's interesting if you visit the RSKR website, you can go through a host of training material. As you say, the server, the connectivity, we have now the 500 Mbps RailNet connectivity and the 100 Mbps NKN network. So this is very interesting. We have pretty well connected. Almost all the hostels are now Wi-Fi connected, including the QRH. We have a number of outreach training programs where we have conducted a seminar on the wheel shop and machine productivity, the wheel shop life optimization at Kaufmo in New Delhi. The courses which have been recently developed are the failure investigation cause analysis, for which board has been always emphasizing, the Internet of Things and its applications on IR, then a trainset advanced course, which we'll be planning next year, a special course on hot axle and train parting, which is the burning problems using the entire IR and the field. More courses on outreach training programs. In fact, I was trying to tie up a course in the freight course in Goa. Let us see it materializes. Sometime, even if not in March, we should try to do something in. But I welcome the initiative of PCME SWR, who has given me some commitment on this. Let us see how it will materialize. The outcome of our efforts in service training program, we have totally trained about 2,293 trainees, and this is by far the best so far. On the mandatory courses too, we have been doing well this year, not lagging behind the previous years. And as an outcome of the efforts, our trainee days also has seen certain lot of growth. During the current year, the total on-campus trainee days for mandatory courses have been the highest ever. And as you see, against last year, the online courses, we have brought it down. This will, by the end of March, we will exceed what we have here. In the infrastructure facilities, we have 6 classrooms, 1 computer room, a mechatronics, IoT lab, and a large number of other labs of topical interest with the rolling stock labs. And then we have a library with 16,800 plus books. It's one of the well-endowed library, and covering the basic sciences to a whole gamut of engineering and fiction, non-fiction, and a lot of other books. And we have here the beautiful auditorium. It has been the gift of the past. And I've also learned from Shri Arun Bhagra has done a lot of work in the initial stages and has been instrumental in this auditorium. And while he was the director here at IRIMEE, and then he has envisioned the Steam Loco concert.
And it's an interesting thing. I could never even think of something like this, but it is the great stalwarts of the IRMEE who have planned this interesting facility, and this acoustically very nice with state-of-art acoustics and a state-of-art projection too. Then we have a library reading section and technical manual section. Then we have a host of different models. Especially we have one interesting thing on the 3D printer, which is the latest in the manufacturing technologies. And the IoT trainer kit we have added, and we have upgraded both the electro-pneumatic and the electro-hydraulic trainer kit and linked it up directly with the PLC. Earlier it was not. So we could not teach PLC. PLC we had to teach it independent of the hydraulics and the pneumatics, but PLC, which is the heart of the programming data logic, which operates all this. So that's it. So we will, and the diesel model rooms, and then we have 3 hostel buildings and a good amount of accommodation, standard accommodation. And soon, of course, we are also going to plan to air condition the entire Gymkhana. Now it's partially air conditioned. Soon we'll be completing the air conditioning. Already a project has been sanctioned in this regard. We have model rooms on the CNW, freight, mechatronics, diesel, TLAC. We have the trainer kits, as I already told all of you, and the 3D printer. Then the newly set up TL and AC model room. There's an interesting story to go by this. This is a very courtesy Mr. Ashish Agrawal of, when he was GM RCF, we got this lab. Then the infrastructure upgrades, we have done a lot of number of improvements here. The granite flooring, the renovation of the IRMEE roads, the steel fencing. As you see, the railings in the corridor, we have shown some improvement. A number of such improvements have kept taking place, and the renovation of the dining hall, and then the security outpost, most of the hostels. Then the boundary wall for QRH was not there. It is now a very solid boundary wall we have. Now, the things which are in the annual is we have enhancing our transit accommodation facility for at the Antrik Niwas by means of 4 beautifully turned out suites and 4 beautiful Type 5 quarters, which is uniquely designed. And we have also a lot of metallurgical microscope and welding simulators on the annual. Then we have the smart classrooms, which are going to be planned, and then we have the international standard classrooms and the standard mini auditorium. Basically, it uses a large classroom. Then we have these hostels here, all the 3 of them, all the facilities. The photographs are self-explanatory. Then we have a number of sanctioned projects and way to go. Then basically, I'll come down to the assistance required. We are currently just after I've relieved 2 of the important faculty here, we are in short of a number of staff. And as the entire IR is stuck with the junior scale, so we too have a large number of junior scale vacancies, and the senior scale also is the offshoot of that. So these 2 vacancies, barring that, we have almost about 2 or 3 vacancies in the JHG and 1 vacancy in the SAG, which I hope board is already working on it to fill up. And then already the people have been posted but not yet relieved. So I request AMPU sir to put his weight across and get something done here in this regard. And one of the important areas where we have a problem is the delegation of powers to the CTIs. There has been a problem now of late, and works which are already sanctioned and principally sanctioned are awaiting the formal sanction by the. Earlier we used to get it done from DG Nair, but now it's told that DG Nair does not have the power of GM. So there is something which is working up in the board. So we hope that get resolved soon so that we get our sanctioned projects through. Then we also have proposed for a train set model room and an entire train set facility. So that is thing which is to be planned and already proposed in the IRPSM module, and we look forward to getting it done early. Thank you, one and all, for giving me such a patient hearing. And I'm done with my annual report. Thank you very much.
Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. In the time that remains, we shall, it is now time for our awardees to please take their places because it's now time for the certificate distribution. In the words of one famous artist, the thing about awards is that it's a clap for the people who do all the hard work behind the scenes. So to celebrate and encourage the spirit and applaud the mettle of those of our trainees who in the past year who strove for excellence behind the scenes and brought forth their best in various important training courses throughout the year 2023, I request our esteemed guests, Chief Guest Mr. R.K. Mangla, Additional Member Production Unit and Railway Board, Colonel Arun Bhagra, Ex-Director IRIMEE and retired AGM South Central Railway, and ADG sir, to please ascend the stage for the presentation of the certificates and medals. As I announce the names of the awardees, I request them to please come up from this side and take their certificates. I request AMU sir to please hand over the awards. Beginning with Shri Tarak De, 23 SCMS 1 from Diesel Loco Shed Andal, Eastern Railway. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our awardees. For best performance in 23 SCMS 2 CMS course, we have Shri Nand Kishore Chaudhary, CMS Diesel Loco Shed, Vishakhapatnam, East Coast Railway. For best performance in 22 Jet 3 course, we have Shri Ashok Kumar Chandel, Tikyapada Coaching Depot, Eastern Railway. My apologies, Mr. Ashish Kumar Chandel. For best performance in 23 Jet 1 course, we have Shri Sulaiman Abbas, JE, CNW Muradabad, Northern Railway, please. Shri Sulaiman Abbas, 23 Jet 1 course. For best performance in 23 Jet 2, JCNW Matunga Central Railway, Shri Ganesh Sanjay Kadu, please. Ladies and gentlemen, these are our best performers of the last year. I request you to please put your hands together. Shri Ganesh Sanjay Kadu, please. Yogesh is next. For 23 Jet 2 course, best performance in 23 Jet 2 course, we have JCNW Matunga Central Railway, Shri Yogesh Baburai Bodhankar, please. Next, we have for 23 JE Coaching Store, Gandhidham, Western Railway, Shri Prakhar Gupta. Shri Prakhar Gupta, JE Coaching Store, Gandhidham, Western Railway.
Thank you, sir. And I would request Colonel Bhagra to please do the honors. With the next Shri Vineet Kumar, JCNW Kalka, Northern Railway, for best performance in 23 Jet Special 1 course. Please. Mrs. Prakash is next. Yeah, I go frozen. For best performance in 23 Jet 4, we have JE Coaching Depot, Gaya, East Central Railway, Srimati Sapna Prakash, please. Mr. Shukla is next. Moving forward now to the officers' courses, I call upon 22 for best performance in 22 Bind 1 course, AWM RWP Bela, East Shri Arvind Kumar Shukla, please. Arvind Kumar Shukla, AWM RWP Bela, best performance in Group B induction, please. Mr. Shrivastava is next. For best performance in the 22 Bind 2 course of Group B induction, we have AME Carriage and Wagon Banaras, Northeastern Railway, Shri Ojas Srivastav, please. Mr. Kumar is next. For best performance in Group B induction, 22 Bind 3 course, we have AME Diesel, Bardhaman Diesel Shed, Eastern Railway, Shri Sanjeev Kumar. Shri Sanjeev Kumar, ADME Diesel, Bardhaman Diesel Shed, Eastern Railway. And rounding out with last but not the least, our probationers. Rounding out now with the last but not the least, the last of our probationers, Shri Amit Kumar, AME Trainset Depot, Shakur Basti, Northern Railway, for best performance in probationary training as IRISME 2018 batch. And finally, Shri Kumar Chandan, AME Freight, Mumbai, Central Railway, for best performance as a member of the IRISME 2019 batch probationers. Thank you very much, respected sirs, and many congratulations to all the awardees. In the words of celebrated American virologist and biomedical scientist Jonas Salk, the reward for work well done is the opportunity to do more. We wish you all the very best for your future assignments. Thank you, sir.
Moving forward, before I proceed to our respected chief guest, we are fortunate to have among us Colonel Arun Bhagra, a member of the 1967 batch of Special Class Railway Apprentices, who, after a long and varied career, including a tenure as Director IRIMEE here at Jamalpur, retired as Additional General Manager or AGM South Central Railway. I request sir to please ascend the stage to grace us for a few words. Shri R.K. Mangla, AMPU, sir. Shri Sharad Yagnik, Shri Ravi Kumar, ADG IRIMEE. Ladies, gentlemen, I'm quite humbled to stand before you, but it is a hallowed day for all of us who had the privilege of spending our formative years in this wonderful institution, an institution which changed boys into men or girls into ladies. All of you are very fortunate, first to belong to the mechanical department, and secondly to belong to the great organization we know as the Indian Railways. And IRIMEE has been, as we saw, the oldest amongst the training institutions, starting back to 1888 as a technical school of Jamalpur workshop. So we have a very hallowed history, and I wish we'll all also have a very equally hallowed or better future, because you all of us, we've seen our times, but you all are living in times where change is happening very rapidly within the system and without. IRIMEE, I'm sure, will be in the forefront of guiding all of you and helping in transform the railways to be a better and more service-oriented organization. My best wishes and thanks to the ADG, his faculty, the other staff members, and all the trainees here. God bless. Thank you. Thank you very much, sir. Our chief guest for today, Mr. R.K. Mangla, Additional Member Production Unit and Mechanical Engineering Railway Board, is a pillar of the railways who needs no introduction. He joined the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, or IRSME, in 1986 as an officer of the 1981 batch of Special Class Railway Apprentices, or SCRA. During his long and versatile career on the Indian Railways, he has worked on several important assignments on Northern Railway, North Central Railway, North Central Railway, Kafmore, New Delhi, and IRIMEE Jamalpur. He has handled several key responsibilities, including Additional Divisional Railway Manager, or ADRM, Jhansi, Group General Manager in RITES, Chief Workshop Manager, Kharagpur Workshop, Southeastern Railway, Divisional Railway Manager, Kharagpur Division, Southeastern Railway, then Principal Chief Mechanical Engineer at Rail Coach Factory, Kapurthala, and then finally, as Additional Member Production Unit, he is involved in administration, production planning, and resource allocation for 8 production units and 42 workshops of the Indian Railways. He also holds a master's degree in industrial and product design from the Indian Institute of Technology, or IIT Delhi, and a master's in business administration, or MBA, in enterprise management from Management Development Institute, or MDI, Gurgaon. Sir, we are honored and blessed to have you here. I now request you, sir, to kindly ascend the stage to address the gathering. Respected Shri Arun Bhagra, ex-AGM South Central Railway and ex-Director IRIMEE, Shri S.K. Yagnik, ex-Director IRIMEE, Shri P. Ravi Kumar, current Director IRIMEE, Shri S. Vijay, CWM Jamalpur Workshop,
all senior railway officers from IRIMEE, Jamalpur Workshop and Railways, the faculty members of IRIMEE, all the trainees, guest invitees, ladies and gentlemen. It is a matter of great pride for me to participate in today's 97th Annual Day celebrations of Indian Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineering, IRIMEE. IRIMEE, one of the oldest central training institutes of IR, started in even before 1917 by the British Indian Railways, has over the years trained thousands of engineers and staff of IR. It was responsible for shaping and developing the careers of special class railway apprentices or SCRA scheme of UPSC, all of whom have served IR with dignity and distinction, rising to the highest ranks of CRB, member, railway board, and GMs, etc. IRIMEE has pioneered the training in best practices of mechanical and electrical engineering, rolling stocks, green technology, as well as general management and administration. When there was a great dearth of industrial manufacturing transportation technologies in the country, IRIMEE supported IR to inculcate the best world practices in rolling stock design, manufacturing, operations, and maintenance of a vast fleet of locomotives, coaches, wagons, and other rolling stock. IRIMEE has always maintained not only the latest training facilities, labs, models, library, etc., in all rolling stock, it also encouraged trainees to participate in sports, tracking, yoga, social and cultural activities for an all-round development of railway officers. Today, IRIMEE can boast of a sprawling institute, campus, hostel, sports facilities, and all the various facilities as told by Director in his address. And IRIMEE is supported by one of the finest and oldest railway workshop, Jamalpur Workshop, a railway township, golf course, diesel shed, and full assistance of Eastern Railway. It has modern labs for traction, coaches, wagons, ACTL, mechatronics, modern classrooms, as we have informed by Director IRIMEE. Various new labs have been added, new facilities that have been added by IRIMEE for the best training in latest technologies and current practices in IR. The constraint of logistics coming to Jamalpur is also being addressed by Eastern Railway by providing stoppages in important trains and giving linkages in for better services. Today, Jamalpur is better connected to Kolkata, Patna, and rest of the country. I congratulate all the award winners in today's ceremony and call upon them to serve the railways and the nation with great vigor and enthusiasm. Today, as told by Shri Arun Bhagra, is age of new technologies, efficiency, productivity, as well as service and dedication to fellow countrymen. Let us continue to learn more and more from IRIMEE and share the knowledge with our colleagues back in railways. I call upon IRIMEE faculty also to proactively learn the latest technologies and practices and impart the best training to trainees with full sincerity and dedication. I once again thank Director IRIMEE to give me this opportunity to be part of this celebration and understand the latest development and facilities that have been added at IRIMEE. I convey my best wishes to all of you for a very successful and satisfying career ahead. Thank you.
Thank you very much, sir, for your illuminating speech and inspiring words. We shall cherish and remember them. This brings us to the close of today's event here, and both our guest speaker, our chief guest, Colonel Bhagra, have all made a very long. We have all made a very long journey to be here, but I dare say I speak for all of us when I say it was well worth it. So thank you very much once again, sir. To mark the visit of AMPU sir and esteemed guests to this historic institution, I now request ADG sir to kindly present mementos to them, starting with Colonel Arun Bhagra, retired Additional General Manager, South Central Railway, and ex-Director IRIMEE. Next, Mr. S.K. Yagnik, retired COFM Nair and ex-Director IRIMEE. And finally, to our chief guest, Mr. R.K. Mangla, Additional Member Production Unit, Railway Board. Thank you, sir. I now request Professor IT and ENHM, Sri J.P. Singh, to please present the vote of thanks. Thank you. And good afternoon to everyone present here. I am JP Singh, Professor IT and ENHM, and it is my proud privilege and honor to convey a vote of thanks to this August gathering here today. I am thankful to Mr. R.K. Mangla, AMPU, Railway Board, for sparing his invaluable time to join us today as chief guest for IRIMEE Annual Day celebrations and his address on this occasion. Further, I must express our great gratitude to Colonel Arun Bhagra sir, retired AGM of South Central Railway and ex-director IRIMEE, for agreeing to our invitation and gracing the occasion today. We all are greatly motivated by your presence and look forward to your lecture tomorrow, sir. I'm also extremely grateful to Mr. S.K. Yagnik, retired COFM Nair and ex-director IRIMEE, for joining the event to deliver the inaugural lecture on the export potential of Indian Railway's rolling stock, and being part of IRIMEE Annual Day. Our awardees traveled from all across Indian Railways to be here with us today. Thank you for your presence and congratulations once again upon your success. I am also thankful to all the audience, including CWM Jamalpur Workshop, officers of Jamalpur Workshop, our awardees, our faculty members and trainees, members of the press and media, and those who have joined online from their respective locations and made this occasion successful by their presence. I would also take this opportunity to thank CWM JMP and his team at Jamalpur Workshop, team of Malda Division, for their wholehearted support. I'm also thankful to Mr. P. Ravi Kumar, ADG IRIMEE, for his guidance and support that has made today's event here possible. We must also mention our senior faculty members, including Dean SP RST, who unfortunately could not be here today, Mr. Anil Kumar Devedi, and SP WMT, Mr. Janardhan Prasad, in this regard. Last but not the least, my thanks to the faculty members, staff of IRIMEE, the whole team who has organized this, including office and all support staff, for their tireless contribution to the success of this event. Thank you very much. With the permission of AMPU, we would conclude this gathering here with national anthem. So may I request, sir, and all of you to please stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जाके तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। Thank you, sir. I now request our esteemed guests to please, and our awardees to please join for the group photograph.